welcome to today's class. And actually, the topic for today is rather vague, so I would appreciate if we can start our session with some of your doubts. ମାନେ ତମମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଯାହା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଯାହା କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତ ସେଥିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଅଦରୱାଇଜ ଦେଖ, ମୋ ପାଖରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ କହିଦେବି, ମତେ ଯାହା କହିବାର ଅଛି ମୁଁ କହିଦେଇ ଚାଲିଯିବି, ଠିକ ଅଛି। ବଟ୍ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଲାଇକ୍ କି ମୁଁ ବାସ୍ ମୋ କଥା କହୁଛି ଆଣ୍ଡ ତମକୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ଅଛି, ହେଲା। So that it should be whatever you want to know. Therefore, I request ki once we start the session, you please ask me any of your queries. Otherwise, also we have enough material as such. I can tell you what to do and what not to do in GS preparation, because I believe today's session is called GS preparation, right? Originally, this was supposed to be GS answer writing class, but very similar. So ପିଲାମାନେ ତମ ମନରେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, କିଛି ଯଦି ସ୍ପେସିଫିକଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ପ୍ଲିଜ ପଚାର। ଅଦରୱାଇଜ ୱିଲ୍ related to preparation. Otherwise, I'll start my content. And please don't let language be any barrier. ଓଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶ କୋଉଥିରେ ବି ତମେ ପଚାରି ପାରିବ। Good evening, sir. Good evening. Sir, ଏବେ ଯୋଉ remaining 35 days ରହିଲା, କୋଉ subject କୁ କେମିତି କଣ distribute କରିବୁ mains ପାଇଁ ଟିକେ each subject? Right. Okay. Just note down your queries for the moment. So you want to know how to distribute, or how to, let's say, how to plan. That's what you are saying. Revision. Exactly, sir. Revision ପାଇଁ କେମିତି କଣ? ଠିକ ଅଛି, how to revise. Okay. Anyone else? Any other doubts? How to revise? Good evening, sir. Good evening. Sir, ମୁଁ ଜଣେ working professional and ମତେ ଟିକେ preparation ପାଇଁ problem ହଉଛି sir. Optional ସହିତ GS କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ମାନେ optional ର ତ ପଢିକି test ଦଉଛି, still ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡେ ମୋର cover କରିବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ GS କୁ କେମିତି ମାନେ prioritize କରିବି, ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ ବହୁତ କମ ଅଛି, ତ ମୁଁ କେମିତି GS କୁ prioritize କରିବି sir? ମାନେ ଟିକେ ତା ପାଇଁ ଟିକେ methods କହିଲେ। GS ଆଉ optional ଭିତରେ how to strike a balance, how to find out time for these two subjects. ଏଇଆ ପଚାରୁଛ? Yes sir. Hello sir. Yes. Hello. Am I audible sir? Yeah, sure. Go ahead. Sir, ମୋର ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି sir, ମୋର ବହୁତ ମାନେ ଏମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ କନସୋଲିଡେଟ୍ କରିବାରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ସ୍ପେସିଆଲି GS4 ପାଇଁ sir। ତା ପାଇଁ କେମିତି ଟିକେ ମାନେ ତାକୁ କନସୋଲିଡେଟ୍ କରିକି ରିଭାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିବା କଥା? Tell me ki, are you having issue in, means you have a lot of material, but so you are confused and you don't have any consolidated material to ରିଭିଜନ revise? କରିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡେ ମେଟେରିଆଲ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ରିଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଅଲରେଡି ନୋଟ୍ସ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ବହୁତ ଗୁଡେ ଅଛି, ତାକୁ ମାନେ ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜ କରିପାରୁନି। Excess of material. Yes, anyone else? Sir, ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଯେ ଏମିତି କୁହା ହଉଛି ଯେ ମାନେ ଯାହା ବି GS ଅଛି ତାକୁ UPSC ର previous year question ରୁ theme ମାନେ ସେ ଅନୁସାରେ notes ବନେଇକି ସେ ଅନୁସାରେ prepare କରିବା ପାଇଁ। ତ sir ତାକୁ ଆମେ କେମିତି prepare କରିବୁ, କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ time କମ ଅଛି, ଆଉ ମାନେ that the only thing I can do now। ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ପୁରା stick to, ମାନେ ମତେ ବହୁତ specific ହିଁ ପଢିବାର ଅଛି, job ସହିତ ଏଇଟା ମାନେ balance ଟିକେ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ time ବହୁତ କମ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ guidance। Okay. Yes. Anyone else? No, sir. ଯଦି possible. Hello. Varsha. Yes, Varsha, go ahead. Yes, sir. Am I audible to you, sir? Yeah, sure. Yes, sir. Sir, my question to you is, we often face a little difficulty in completing the paper when it comes to like ethics paper, because there are a lot of case studies, like you have to go through it and then you have to read all the, I've said, maintain all questions according to it. So how to just complete the paper? Or if I say mock test chaluchi, I'm unable to just complete it.
माने गोटे केस स्टडी माने छाड़ी जोची, it has been like, so how to approach it? Okay, very good. ठीक अच्छे आउ कार कौन डाउट अच्छी? Someone else was saying something which कहूला आउ जाने के या अगर आउ जाने के कहूला, if you want you can ask your question. सर सही गोटे ओवरऑल गोटे प्लान टा केमती लास्ट मास ए मंथ रे रहया कथा सेटा भी कहबे। Overall plan for last month. How many days are left exactly for your exam? 40 days पाखा 40 days 40 days. 30-40 days। Anyone else? We are gathering questions in the beginning so that the discussion is does not go off topic, or I don't discuss a lot about things that you don't want to know. Our topic has to be, our discussion has to be things you are facing problem in. ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ request କରୁଛି ଆଉ ଯାହାର କିଛି ଯଦି କିଛି doubt ଅଛି, we are collecting all the problems right now. I'll answer each and every one of your queries. Yes, anyone else? No. Sir, one more question. Hello. हाँ बच्चा देखो जड़े Yes, मल्टीपल sir. क्वेश्चन भी पचारि परियो किछि इशू नाही Yes, जहाँ sir. किछि डाउट So अछि science and tech questions, how to tackle it? माने जो current, obviously it's all current based, but sir, coming from like a non-technical background, like how can we just decode what kind of questions we're gonna ask? I mean, I'm gonna prepare for the GS paper for science and tech. Okay. Anything else? No. ठीक है, then I think we don't have enough content to last for 2.5 hours, but let's see if during the discussion also you have any further doubts also you can ask. Otherwise, my task is very simple, and all of the queries that you have raised are sort of basic to middle level, not very difficult questions. So, ठीक है. So let's start our agenda for today. Let me turn on my screen share. Screen share ହେଇଛି? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. कोउठी भी जदी voice break हबो किंबा किछि बुझी परिवनी सेठी मते immediately interrupt करियो. Okay. Otherwise, I may go ahead and please mute your audio. Audio mute कर दियो जतले क्वेश्चन पचारियार थिबो सतले ही बाहर audio on अछि. Please mute your audio. जतले क्वेश्चन पचारियार थिबो सतले unmute कर दबो निजो. Please. I don't know, someone keeps someone's audio is on. Madhu, please turn off your audio. Madhu. Very good. ठीक है. So I'll pick up a few of your queries from the beginning, and after that I'll tell you some of the things that I want to tell you. Okay. तो ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି doubt ହବ ତ ଆମେ ପଚାରି ପାରିବୁ. ଦେଖ first ହଉଛି କି the question that you asked ki, for example, how to plan for the last month, around 30-40 days, somewhat around 40 days अच्छी तुम्हारा exam ପାଇଁ. ସେଥିରେ ଆମେ କେମିତି prepare କରିବା, and this includes how to prioritize different subjects and all. तो या ପାଇଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି या ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା stress and anxiety ତମ ଭିତରେ ହଉଥିବ. First and foremost, please try to understand that it's very very normal. Okay. And literally no one, not even rank 1 in UPSC OPSC would have cleared or would have covered all the things to study by now. The last day पर्यंत हुए नहीं.
But what you have to understand is that even if you are not able to complete 100%, still if you are, let's say, able to complete 80% of the syllabus, then you are better. Someone who is having, let's say, 40% of the syllabus je cover kari hoji, obviously you are much better than that. So it's all relative. It's a game of relativity now on. So try to, this is not possible, but try to achieve whatever you can do. तो एटा केमतिया करिया. So first and foremost देखो बहुत सारा ट्रिक्स. एबे देखो मु जहाँ भी तुमको कहबी किसी जिनस ट्रिक तुमको लागि पारे, किसी जिनस स्ट्रेटजी लागि पारे. Strategy is an overall way forward. Trick is like small hacks. So whatever works for you, that's great. If it doesn't work, then you feel free to change to some other strategy or trick. I'll tell you what worked for me. So first and foremost, have you heard about this thing, Pareto principle? सुनी चाहिए आना. No, sir. Zero sum. Also known as 80-20 rule. See, this is a phenomenon we have observed कि 80% of effect or outcome in anything or any field usually comes from only 20% of factors, and only 20% of the outcome will come from 80% of factors. So these are your high impact tasks, hit, and these are your low impact tasks or lit. Okay, and one very famous productivity guru, he said that focus on the essentials, forget the peripherals. So this is the essential, only 20% of the factors. This thing you will see replicated in not only your life, in everything. So try to find out. See, UPSC preparation or OPSC preparation maybe 20% maybe it is 30%, 40%, but still try to find out which are your highest impact tasks. For example, in our case, you have to find out which are the most important themes in your different subjects. For example, in history, in geography, in polity, in economics. And how will you know what are the important themes? By going through the previous year questions. My sincere suggestion to you is to spend at least one day identifying all such highest impact tasks or themes. I can give you some examples. For example, I know that in GS3 paper, your highest impact tasks or important themes, every year questions will be asked from themes like sustainable development. Please mute yourself. SDGs. They will ask you questions on renewable energy. They will ask you questions on, and specifically solar. Okay. In, let's say, topics like society, every year there will be questions on women and women empowerment. Okay. In themes like, let's say, modern Indian history, national momentary impact of Gandhi, something related to Gandhi, they will ask you question. Okay. In Odisha specific, so let's say, for example, economics, they will ask you what is the economic history of Odisha, India development hitala. So I'm not here to give you a list of all these themes. That is, in any case, that is not my purpose. My advice to you is spend at least one day analyzing previous year questions yourself. At least last 3 to 5 years mains paper, OPSC रो जहाँ भी mains paper अच्छी ताको analyze करो. ऐसे तो theme उठाओ. And theme is more than any question. Theme is something broader. ये broad topic ऊपरे question आसी. And ता ऊपरे बहुत ही short notes बनाओ. I will give you another trick. So this can be called as a strategy. You say कि you don't have a lot of time, so this is a strategy. Now within this strategy, I will give you a trick. Now let's say कि you are saying you don't have enough time, only 35 to 40 days are remaining. ठीक है. So what to do now? Trick is use ChatGPT or any generative AI and then make very, very short notes on different topics within the theme. Theme रो certain topics ऊपरे just AI को पचारो कि या ऊपरे कौन ही करियो. Let's say कि what are the different initiatives taken by Indian government on solar energy, government schemes कौन कौन अच्छे. So whatever is coming, you make very, very brief short notes. एबे देखो short note भी केमती करियो. फर्रा कहले बुझुजो. एमती गोटे डायरी, स्मॉल डायरी रो पेजेस हला सेमितिया गोटे टॉपिक ऊपरे 4-5टा एमती स्मॉल फर्रा ताको एमती मझिरु एमती डिवाइड कर दो. सेथिरे बहुत छोट छोट अक्षर रे ओनली इंपोर्टेंट फ्रेजेस, कीवर्ड्स ए सब जिंस लिखियो, डेटा, फिगर ए सब जिंस लिखियो.
and through this make very short notes on all the important themes that you have identified, and you have to keep revising it every day for at least 1 hour just before going to bed. Bed jiba agru 1 hour taku revise karo jaha bhi to note karucha. Okay. सर सेटा टिके आउ थरे कोंतु सर से पेपर रे जो टू साइड करके लिखिया Simple paper को fold कर दवा and each part रे एठी गोटे heading लिखिलो, suppose solar energy एते लिखिलो, तापर एठी लिखिलो कि जा जा किसी तुमरो chat GPT रु बाहरी गला. This is I'm saying, suppose you are saying that you don't have content, तुम कहू तुम पाखे बहुत अधिक कंटेंट अच्छे तुम फिल्टर आउट कर पारना. सिंपल चैट जीपीटी जाओ, क्वेश्चन पचार ए थीम उपरे एंड जहाँ जहाँ आंसर आसुची तार बहुत ब्रीफली शॉर्ट नोट बना. सेते सेंटेंस वाइज किसी लिखिया दरकार नहीं, केवल इंपोर्टेंट की फ्रेजेस कीवर्ड्स डेटा रे लिखी. सपोज हमते लिखछ विजयनगर किंगडम. I don't know if this is in your syllabus or not, just giving you random example. तो विजयनगर किंगडम जहाँ फैक्ट्स आसुची 4-5टा फैक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जहाँ आसुची just note down. Okay. Suppose your question is on, let's say, monsoon, Indian monsoon. Monsoon upare jaha jaha aasuchi, just briefly write down. Our purpose is that we should be able to write a 15 marker question out of this much content. Okay. So 15 marker गोटे question ना answer लिखिया पे जति तुम पाखरे content ही परियो. सती just select and move on. Do this within the next 7 days. Just do this blindly. किछि आ करनी सब जिंस छाड़ दियो, just 7 दिन भीतर बाहर करो. ए वाला minimum माने 200 टा टॉपिक्स और सॉरी थीम्स ऊपर है, तुम यदि नोट बने देलो, गोटे डायरी रे नोट बने देलो, जस्ट एंड रिवाइज. You do this for the next 7 days, and for the, so this is 1 week, and for the next 3 weeks you revise from it. Okay, this is the last your Hail Mary. या परे आउ किछि नाही, बुझी होछि. सपोज सम्मान को बहुत जन पिला अछंती जो मन करो एते खराब कंडीशन भी नाही. You know, you have read something, you have made your, let's say you have made your own notes, then condition is much better for you. Now your problem is how to consolidate the notes, right? Someone did ask me about it, how to consolidate your notes. So can you do one thing? I'll give you another trick or hack. You can think of it as a hack. Suppose tomorrow को भी गोटा notebook रे तुम एमितिया note करछो, right? Have you seen any standard textbook किछि देखिछो? Obviously देखिछो, देखि तो थिबो. Standard textbook रे देखिछो chapter सब एमितिया start हेतिबो. But before each chapter, sorry, before your chapters, there is an index, right? सेतरे chapter लिखाई दियो, chapter 1 तार कोन कोन कंटेंट अछि, chapter 2 तार कोन कोन कंटेंट अछि, chapter 3, so on and so forth. Now your job, suppose I'm telling this to people who have made some notes. Okay. Now your job is to make each chapter wise index of your notes. Suppose tomorrow what is poverty and unemployment. Poverty upre economics रे तुम chapter करछो. Okay. Now you go through your notes and then see what are the content in that, and then you make your index. For example, suppose you're in poverty chapter, your index might look like this. What is the definition of poverty? There are different definitions given by different people. For example, there is a standard definition, and a World Bank got a definition देथियो. Then Amartya Sen करो got a definition थिवो, capability approach. So emerging definitions, multidimensional poverty got a new definition. So this is definition. Second थिवो की poverty estimation. ता भितरे थिवो की हिस्ट्री ऑफ पोवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया. फॉर एग्जांपल दादा भाई नारोजी गोटे देइथिले, गोटे तापर डिफरेंट कमिटीज आसिले, दांडेकर रथ कमिटी, बहुत सारा लकड़वाला कमिटी, बहुत सारा कमिटी अछंती, सो ऑन एंड सो फॉर. ओके, नंबर कह जल्दी कह तमे अरे यार कहारो ऑन अछि, रमेश प्लीज ऑडियो म्यूट करो. रमेश रनीश प्लीज म्यूट योर ऑडियो. ओके, तो पोवर्टी एस्टिमेशन थर्ड वुड बी जे पोवर्टी रो क्राइटेरिया कोन कोन अछि. For example, here you will discuss about BPL, how you are estimating that. Okay. Then it might be the status of poverty in India and in Odisha. Fifth would be poverty alleviation programs. See, I don't know exactly what it is. I'm just giving you some broad ideas. For example, Indian government poverty alleviation programs. Different 5-year plans re kono hitila. Okay. Then currently poverty alleviation program kon chalchi. For example, different schemes like wage schemes, NREGS, so within poverty alleviation program, skill development program to hobani. Wage programs are usually known as poverty alleviation programs.
Okay. Then there would be some emerging issues. So these would be based from current affairs. For example, UBI, MBI, whether they are justified or not. Okay. Now there is way forward also. What more can be done? So your own suggestions. So এই ভଳିଆ କିଛି ମୁଁ guess କରୁଛି ତମର এই ଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ note ହେଇଥିବ. Now your job is to make this kind of indices. Spend the next maybe 1 or 2 days in making such indices. Now what is the purpose of this indices? You see what you have done till now, try to understand. Suppose this is your textbook. Textbook ro length kete heidibo, kete pages ro textbook usually heidibo. To take any standard textbook, let's say 300 ru 500 600 eti range bhitere thibo pages ro. Then from that, let's say your teacher or you yourself, after reading the book, or your teacher through the notes, has condensed this into your own note. And this is your class note or any coaching, coaching class note, which is of, let's say, 100 to 200 pages minimum. Right. Now the problem with this is, why are you making notes? Try to understand. We are making notes not only so that we are able to understand comprehension to thik achi gote purpose. Second jinso hochi deep level processing also. By making notes, you are able to integrate new information into your existing body of knowledge. And this also helps in organizing ideas inside your head, and that helps to memorize. Okay. Without organization, memorization will be only rote learning. Okay. But the third and most important part is so that you can revise easily. And remember one thing, whatever is not revised will not be recalled. So jaha bhi revise no karucho exam hall le recall hobo nahi. So our purpose in this last month would be to make something, some consolidated material which you will be able to revise from immediately. So from the class note, if you are making your index, let's say each and every subject ro chapter wise emte index banailo. Economics ro banailo, history ro banailo, geography ro banailo, even ethics ro banailo. Then index will be how many pages? Let's say ki je konosi gote subject, suppose economy ro gote uthailo, for example, hardly 2 to 3 pages hobo. Etikre to index heji bana. So ei bhalya 4टा ki 5टा ki 6टा ki 7टा jeteta bi subject ni. Let's say ki 7 subjects, important subjects to tame karicho emedia paper ro. Then 14 pages. Jodi paper wise kariyo to tale 8 pages ho. How ethics ro mise dele 9 pages ho. So why am I telling you all of this? Now the point is, now in the last few days you can revise from class notes, but just 1 or 2 days before your exam you just revise from the indices. And the point is, whatever you have written your indices, that is the summary of your class note, and class note is the summary of your textbook. So it is possible to revise indices on the day of the exam also. Sedina sakale bi revise kari pariyo, ta purbo dina ratire bi revise kari pariyo. But it is not possible for you to revise the entire class note just before your exam. And that is the time where you will feel panic. Yaar moro kichi mane paduni. And it is certainly not advisable to revise from textbook. Textbook to gote week agaru bi revise kariya difficult. By this backward linking through the revision of index, you will be able to remember at least 60 to 70% of the entire content or important content of your textbook. ଏତିକି ଯଦି ରିଭାଇଜ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ରିଭାଇଜ ହେଇଗଲା। ବୁଝି ହଉଛି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି? Yes, sir. So this is I'm advising to people who have already made notes but their notes are not consolidated. So if your notes are not consolidated, just make indices for different chapters and revise from indices. And while revising, try to recall ki who topic or who heading subheading under a कौन content अछि. Let's say कि तुम्हें इम्तिया index रोटे तैयारी कर देला poverty. तो poverty को index रो तो revise केमतिया करा दिया देखो. वे index को पढ़ियो की definition. Then try to recall कि ता under रे कौन थिला. Suppose ये सब जिनस मन पढ़ियो अछि. Then ठीक अछि. ताले index माने definition ता तुम जानी छी. या ऊपर किछि introduction लिखि परियो. But then you go to poverty estimation, suddenly you don't remember Dadabhai Naroji ko kaun thila poverty estimation. So then you go back to your note and try to read out only this part, jo part ta tumhara mone paduni. Then you saw ki next part you are able to recall, theek achi. Then move on, poverty criteria able to recall, theek achi. Status of poverty able to recall, theek achi. Poverty elevation program mone paduni. Go back to your note, then revise. Here our purpose is we are trying to identify where are the gaps in our memory.
So memory is such a thing that some things would be remembered, some in some places there are gaps. This indexing will also help you to identify these gaps and revise efficiently just before your exam. And once you revise, you will be able to recall. Okay. Again, see, I'm not saying that you will be able to remember everything, but it's a game of relativity. 70% of your textbook, if you are able to revise through indices, your job is done. Through answer लिख करियो. Okay. बुझिए बुझिए. Any doubts in this? चलो ମୁଁ तुमକୁ କିଛି extra ଜିନିଷ କହୁଛି. ଏବେ तुमको କହୁଛି କି schedule କେମିତିଆ କରିବୁ ଆମେ. Okay. Scheduling माने for example time table and content को नेकी आमे केमितिया last 1 month रे what to do in the last 1 month. କିଛି extra points ମୁଁ तुमको कहुଛି. Have you heard about this trick called time boxing? For example, one girl, she said ki she is unable to juggle between her job and between preparation, right? So for people like them who have very less time, there is a trick called time boxing that you can use. Can you time boxing? Or time blocking भी आपको कहा जाए, time block और time boxing. No. ठीक है. Am I audible? कौन हला connection कटी हला? Someone please respond. Yes, sir. कनेक्शन Audible. ठीक अछि सर. Yes, sir, you're audible. ठीक है. देखो जो पार्ट रे बहुत बोरिंग भी लागियो और लागियो कि तुम ऑलरेडी ये सब जिंस जानि छ तो मते कहि दबो कि सर हम जानि छी, प्लीज मूव ऑन, देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट because I have Hello, enough sir. content. Hello, हाँ sir. yes. Sir, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି each chapter ରୁ ମାନେ each subject ରୁ 2 pages ସେଟା କେମିତି consolidate କରାହବ? ତ ମାନେ ଲାଗୁଛି ତ ବହୁତ କିଛି important ना ତ ना ना indexing is not making. indexing माने तुम बहिर इंडेक्स देखिनो कि केबे इंडेक्स माने बुझ पाछो तो स्टार्टिंग रे जो कंटेंट बोली कहि कि थाए सतरे किछि शॉर्ट नोट लिखिवार नाही. You just go to your own note and find out which are the headings and subheadings. बस ताको ही लिखियार अछि. मु तुमको गोटे एग्जांपल दउछि देखो. सपोज तुमरो अछि इमोशनल इंटेलिजेंस गोटे चैप्टर अछि एथिक्स रे. yes, एथिरे sir. तुमे लिखिथिबो बहुत सारा जिंस Hello, sir. Not audible. नेटवर्क इश्यू ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ. ଭଏସ ଆସୁନି So, नो सर. ଆଚ୍ଛା ଭଏସ ଆସୁନି ନା ଓକେ No, କଲ୍ sir. କରୁଛି No, sir. ଓକେ ୱେଟ୍ କର
मेंस डेट केबे कोन हबार चांसेस टा जଣା पडुची कि 15 ରୁ 25 ଭିତରେ ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। डेट वन्स फाइनल हे आसी जिवो 2-3 दिन ଭିତରେ आसी जिवो मोस्ट प्रोबेबली ए वीक रे ही आसी week जिवो। about कोन कहला last week, towards last week about it. ना 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 लास्ट वीक में सेकंड वीक पर ही सेकंड वीक रे ही हबो। माने 10 Yes, sir. पूर्व हेबो नि तो सर ना हेलो सॉरी वॉइस मोर वॉइस मझरे हाँ वॉइस हम्म वॉइस ब्रेक ହେଇଥିଲା। ओके ओके केते पर्यंत शुणिथिले लास्ट रे कहला इमोशनल इंटेलिजेंस तो एग्जांपल अरे दो। आइतला तो तो मु बस या कहूतली कि तुमको ସେଥିରେ इंडेक्सिंग रे तुमको कंटेंट लिखियार नहीं केवल हेडिंग एंड सब हेडिंग रो गोटा शॉर्ट ब्रीफ नोट बनायार अछि नोट तो नो इंडेक्स बनायार अछि which is linked to your note एंड यार पर्पस होची कि आमे इंडेक्स रु पढ़ी कि आमे ट्राई करिया रिकॉल करिया ओके रिकॉल करिया ट्राई करिया कि मोर को जिंस गोटा मने पडुची कोटा मने पडुनी जोटा मने पडु नाही केवल सेटा को जाई कि बैक जाई कि तुम नोट रे चेक करियो कि कोन अछि। तो यार पर्पस यह है कि आमे माने एफिशिएंटली आमे बाहर कर परिया कि को पार्टा हमको जणा अछि को पार्टा हमको जणा नाही दैट इज द ओनली पर्पस Yes, बुझी sir. होची Yes, so sir. that you don't waste a lot of time revising things that you already remember okay. तो इतरे Okay, इतरे sir. कितने टाइम लगे इतरे बेस्ट टाइम लागिवनी इट्स जस्ट यू हैव टू जस्ट फाइंड द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स 2 to 3 hours between. वेरी गुड ठीक है सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट टाइम ब्लॉकिंग और टाइम बॉक्सिंग फॉर पीपल हु आर लेट्स से वर्किंग प्रोफेशनल जो माने सेमान को पाई Sir, स्पेसिफिकली screen show करूनी। वेरी गुड देखिए यदि प्रॉब्लम हो मते मझरे मझरे इन्फॉर्म करियो अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू नो so next part is time blocking that is specifically important for working professionals जहाँ पाखरे टाइम बहुत कम अच्छी समाने केमिता मैनेज करिवे ओके so someone was asking कि she is not able to juggle between her work and preparation so again this is not a hack or a trick this is a strategy okay? Try to understand what this is one is time blocking another is BPT please remind me about this thing also otherwise I'll forget so first about time blocking देखो तुम मान को जो माने काम करूछ सपोज कि किसी अनअवॉइडेबल काम अछि जोटा छुट्टी नहीं परिबनी और से टाइम रे प्रिपेयर ही परिबनी तो तुम पाखरे कम टाइम अछि so what you have to do is to use your time effectively and efficiently okay जोटा अन्य पिला माने अफोर्ड करि परिबे टिके टाइम वेस्ट करिया यू कैन नॉट अफोर्ड एनी टाइम टू वेस्ट so what you have to do is to try to understand your entire day and night this can be divided into different time blocks time blocks are nothing but chunks of time बुझ पारछ suppose तुम्हारा ऑफिस स्टार्ट होची लेट्स से 10 am रू and सरुची 4 pm रे and this is the time let's say 9 am to 10 am in which you have to get ready and go to office okay then let's say you are able to wake up at 6 am then this is one time productive time 3 hours of productive time this is a time block that you can use for your work so this is taken up you cannot use this let's say after this you are reaching home at 5 p.m and from 5 p.m to let's say 8 p.m you can this is one block 3 hours in which you can study again from 8 to 9 p.m you have some other commitments and from 9 p.m to 10 p.m you are able to 1 hour you are able to work so ebe tinita time block emitia bahari gala so ei tinita time block this is your golden time in which you can study and you have to study anyhow between this period so what you will do is ki you then plan to study something or do something in this period which is as per two things. Use two methods to understand this. One is 80-20 Pareto principle, that is highest impact task. The other strategy is known as BPT, biological prime time. यार माने कौन मैं तुमको एक्सप्लेन करी हाईएस्ट इंपैक्ट टास्क बुझिছো
Now let's try to understand what is biological prime time. ଏବେ ଗୋଟେ experiment କରିବ or already maybe ତମେ ଜାଣିଥିବ ନିଜକୁ ତ ବୁଝିଥିବ କଣ ଅଛି. Try to think कि दिनर कोउ टाइम रे तमरो एनर्जी आउ फोकस हाई रहे और कोउ टाइम रे लो रहे. Let's say for example you are waking up at 6 a.m. Okay, and this is noon, this is afternoon, and this is night, this is midnight. Okay. So let's say to give you my example, let's say when I'm not able to wake up at 6 a.m. and this is the energy level. This is highest, this is lowest. So I wake up somewhere at 8 a.m. So let's say still if I'm able to force myself to wake up at 6 a.m., my energy level would be somewhere around this. Now somewhere around 9 or 10 a.m., my energy would be somewhat moderate. Around 11 to 12, okay, noon बेलकु मोर एनर्जी लेवल सबुठु हाईएस्ट थियो. ए टाइम रे मु बहुत बेसी पढी पारि. लेट्स से 10 am रु 1 pm अराउंड मु बहुत बेसी पढी पारि. बट अगेन मोर एनर्जी रिड्यूस करे स्पेसिफिकली आफ्टर लंच मोर एनर्जी बहुत डाउन हो जाए. Then again towards evening it starts to pick up. Let's say 4 or 6 p.m. around it starts to pick up. Then from 8 a.m. to 8 p.m. to 10 p.m. it is on the peak. And afterwards again it goes to downhill. So my purpose is try to understand now these periods are your biological prime time BPT, which is as per your body buildup, what kind of a person you are. You know, there is a concept of day person and night person. These are all मतलब तुम्हारा biological clock हिसाब रे, okay, circadian rhythm हिसाब रे तुम्हारा determine हुए. बहुत सारा factor अच्छी है जिससे जिन सब को जिबा नहीं. But my point is कि these are all scientifically proven. It's not as if कि you can randomly change it. You can change it by the way. 1 month लाके change करियो आपको. Circadian rhythm भी change ही जाए. But obviously by last minute रे किसी change करिया दरकार नहीं. What you should rather do is कि try to find out which are your biological prime time. So this is now you understand that this is your time in which you are most alert. Therefore, whenever you are most alert, and this is the concept combining HIT and BPT. Try to do the highest impact tasks during your BPT as far as possible. I'll repeat again. Do your HIT during your BPT. Means जो task हो तुमको 80% of the outcome मिलियो, which in our case is all the important chapters or themes which is being asked by OPSC. Try to do this in your BPT. Now, obviously, one question would be, ki, suppose I'm in my office at this time. So what should I do? So if you cannot utilize, let's say, one BPT, then try to at least maximize the second BPT. Okay. So let's say यार माने हला कि suppose जोटा भी तुम्हारा highest sorry biological prime time जो भी time period रे रहूची, let's say कि morning रे रहूची or evening रे रहूची or late night रे रहूची, you try to use those things to study the most important subjects. Means जदि तुम्हारा morning रे biologically peak होची, energy level high होची, सेतबेले तमे essay पढिया को लागुछ, then you are wasting your time, because essay can be done, let's say, during other time also. But which are the most mark fetching things? Let's say optional. Now it is a mark fetching subject. And you study this during your biological prime time. Let's say a mock test, which is very important for you right now. You can schedule all your mock tests during another of your BPTs, biological prime times. Okay. Don't waste these times in trivial things. And also the understanding of this concept will also make you realize that all intervals of time are not equally important. For example, जतले suppose तुमको तुम्हारो biological prime time BPT रे जतले तुम्हारो energy और focus level high अच्छी, ततले तुमको सांगो के तुमको डाकिला कि चल भाई और चल सांगो हमें जीवा कोठी उड़े let's say उड़े movie देखे हो जीवा. Now you have to say no because this is your most precious time. Biological prime time is your sacred time. You have to defend it in a sacred manner because this is your most productive time. Okay. Now wasting, let's say, suppose you are able to watch movie in later time also. Afternoon session में भी तुम्हें schedule करी परियो. जो time रे तुम्हारो focus एते बेसी नहीं. सही time रे schedule करी परियो. But जतले तुमको पढ़िया को माने तुम्हारो attention बेसी रोची, सही time रे schedule करियो नहीं. Because afternoon or 2 hours, this is not equivalent to 2 hours in your biological prime time. BPT ro 2 hours is much more than what is 2 hours in other time. Okay. To give you another example, many a times when
someone wants to meet me or talk to me, they want to schedule a conversation or a meeting. I usually fix the meeting somewhere around 2 p.m. to 3 p.m. because I know ki this is not the most productive time for me. So my most productive time ମୁଁ ଯୋଉ time ରେ ମୋର energy and focus level high ଥିବ ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି important ଜିନିଷ schedule କରିବି which is more mentally stimulating, ଯୋଉଥିରେ ମତେ mentally focus ବେଶୀ alert ରହିବାକୁ ପଡିବ. Okay. And time blocking is this method. By the way, time blocking out within the point achi. So once you fix your important task during this time, then you allow yourself some flexibility also. Suppose ethire kichi hei no parila, then you can shift it to the next block. But in any case, once you have made a schedule, then try to stick to the schedule as much as possible. And if you are able to, let's say, finish even 80% of whatever you have scheduled for today, 20% ବଳିଗଲା, ସେଇଟାକୁ 20% କୁ next day ର schedule କୁ transfer କର ନାହିଁ, because otherwise your entire schedule will be haywire. So what you have to do is कि ଯାହା କିଛି left out ହେଇଗଲା ତାକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ note କରିଦିଅ, digitally ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ନିଜର notebook ହଉ, just note out कि ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ left out ଅଛି to be read. So let's say for example you are studying something related to Odisha history today. Okay. पूरा entire Odisha history ଆଜି ତମର ସାରିବାର target ଥିଲା. Let's say 2 ଦିନର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା କି ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି 2 ଦିନରେ ସାରିବି, ଗତକାଲି ତୁମେ 50% ସାରିଦେଲ, ବଟ୍ ଆଜି ଯେତିକି ତୁମେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲ ଲେଟ୍ସ ସେ ତାର 30% ସାରିଲ, 20% ଆଉ ବଳିଗଲା. ଓକେ, ଲେଟ୍ସ ସେ ଲାଷ୍ଟ କିଛି ପାର୍ଟ ବଳିଗଲା କି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଥିଲା, ଲେଟ୍ସ ସେ କି ମାରାଠା କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ରହିଗଲା. ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଡେ ସପୋଜ ତୁମେ ତୁମ ଅରିଜିନାଲ ସେଡ୍ୟୁଲରେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ରଖିଥିଲ, ସପୋଜ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇକୋଲୋଜି ରଖିଥିଲ, ଏଇଟା ଆମ ନର୍ମାଲ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି କି ଯାହା ବି ବଳିଗଲା ତାକୁ ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ସିଫ୍ଟ କରିଦେବା. बट जदि बहुत अल्प किसी पार्ट बड़ी होची, रादर नोट इट डाउन कि ए जिंस टॉपिक मोर छाड़ी ଯାଇଛି, एंड इंस्टेड मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एग्जाम लास्ट 1 वीक और 2 वीक्स रे ए बळे जहा छोट छोट स्मॉल टॉपिक्स रही हिथियो ताको उठेकी थरे पढि दो. यार रीजन एया हला कि our tendency is to try to finish things and try to be a perfectionist. हमें चेष्टा करू कि जहाँ भी हमें पढ़ुछ ना बहुत भल से पढ़ी कि सारिला पर ही नेक्स्ट को जीवु, बट सेटा केबे हुए नहीं 100% कंप्लीट करिया को भी जिंस बहुत डिफिकल्ट. तो या चक्कर कोन हुए तुम 80 to 90% कवर कर साला परे आउ 10 की 20% पाई जदी सेठी स्टक हेक रही गलो ताले बहुत सारा जिंस अन्य जिंस सब छाडी जियो. So don't try to be a perfectionist, try to be practical. Okay, बुझी होची और एथरे किछि डाउट होची? Yes, sir. Now what else? Someone else had asked me about content consolidation. Okay, paper completion. Paper completion मते जने किए जने पचारथिले कि paper complete होन specifically in ethics, and ethics रो specifically case study. Okay, very good. So let's try to understand कि how to complete paper in time. देखो, paper completion is very very important because you have to attempt 100% of the questions, or as far as possible all question को attempt करिया को तुमको पड़ियो. Now there will be question कि किछि question हमको आसु नथो सेतरे कोन करिया. So please go through some of my previous GS answer writing videos. सेतरे मु डिस्कस करछि कि शॉर्ट वीडियोस भी अछि कि जो क्वेश्चन को हमको हम पाखरे कंटेंट नाही, जो क्वेश्चन हमको आसु नाही से भलिया क्वेश्चन को केमिति अटेम्प्ट करिया सेतरे भी डिस्कस अछि. सेतरे स्पेसिफिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग I have discussed in detail with example. Please go through this. This will add at least 20 to 30 marks in each paper. Okay. So this is clear that you have to attempt all of the questions. But how are we going to complete it within given time? Let's say 3 hours रे 15 or 20 एबे केतेटा क्वेश्चन आछि तमरो 20 क्वेश्चन आछि बोधे जीएस पेपर रे 15 questions, sir. 15 क्वेश्चन 2023 पेपर रे भी जीएस पेपर रे 15 क्वेश्चन आछि. 20 marks रो 5टा 15 marks रो 10टा. Okay, very good. So 15 questions in 3 hours. So first what we have to do is you have to calculate at home कि
केतेटा क्वेश्चन अछि लेट्स से 15 क्वेश्चन अछि 5 क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स राइट this is Yes, of sir. 100 marks and 10 questions of 15 marks each that is of 150 marks so total is 250 marks and how many words you are supposed to write 10 marker ପାଇଁ କେତେଟା words I think 200 words or 250 words 50 words. 250 words and for this 200 words Sir, now what you have to do 300 words. 300 words. 300 words for 20 marker Yes, sir. देखो For ମୁଁ ଜାଣିନି 20 marker 300 word and for 15 marker okay 250 word. ହେଇଥିବ I have not seen OPSC previous year question but चलो assuming this is the case then what you have to do is कि first you have to calculate घरे बसी first calculate करो okay घंटाटे नियो बहुत भल से calculate करके माइंड मेकअप करो कौन calculate करियार अछि तुमको कि तमरो हैंडराइटिंग हिसाब रे तुम जेतବେଳେ गोटे मॉक टेस्ट लिखुछ सेतବେଳେ गोटे साइड पेज रे तुम केतेटा वर्ड लिखुछ एंड अकॉर्डिंगली 250 वर्ड्स ପାଇଁ तुमको केते पेज दरकार होउची एंड 300 वर्ड्स ପାଇଁ तुमको केते पेज दरकार होउची आइडियली यू शुड ट्राई टू फिट ऑलमोस्ट जति तुमको स्पेस दिया जायछि सेति फिट करियो ट्राई करियो बट जदी होनी अननेसेसरीली ट्राई करियोनी स्ट्रेच करियो बेसी ओके एही पारे कहारो हैंडराइटिंग बड़ बड़ लेटर के लिखुची के छोट लेटर लिखुची बट फर्स्ट ट्राई टू सिट डाउन एंड कैलकुलेट कि 20 मार्कर तुम जदि फुल गोटे आंसर लिखुछ ताले केते पेज लिखुछ एंड एटाও केते पेज लिखुछ देन कैलकुलेट कि 3 hours ପାଇଁ means 3 hours माने केते मिनिट अछि 180 मिनिट्स अछि एतरु 10 मिनिट्स बाद दे दियो बिकॉज कॉपी अभी तुम रजिस्ट्रेशन लिखियो पड़ियो साइन वाइन करियो पड़ियो है ना आप 5 यूनिट रिवाइज करियो सो 170 मिनिट्स को कैलकुलेट करियो कि 170 मिनिट्स रे 15 क्वेश्चन को कंप्लीट करिया पई तुमको ईच 10 मार्कर पई केते टाइम दरकार और ईच 15 मार्कर पई केते टाइम दरकार लेट्स से कि 10 मार्कर पई मोडे रफ आइडिया दोची लेट्स से कि 15 मार्कर सॉरी 20 मार्कर पई केते और 15 मार्कर पई केते लेट्स से 10 15 मार्कर पई तुमको ईच टाइम आछी अराउंड 10 मिनिट्स एंड फॉर 20 मार्कर तुमको तुम पाखरे टाइम अछि 13 मिनिट्स ओके so keep this calculation in your head now from every time that you go and write a mock test सब mock test से एटा को माइंड रे रखियो एटा तुम टेबल आगे रे भी गोटे चिपके दियो तार रीजन होची because in the actual exam hall there is a tendency to be more careful because you think कि this is life and death situation so careful जतले होई जाओ सेतले हम स्लो होई जाओ स्लो हो गेले कोन 15 मार्कर पे जति टाइम नवा कथा ताठू अधिका नबो 20 मार्कर बेल को टाइम नथियो तुमको मैनेज करियो सेतले टाइम इशू है so first and foremost test is to calculate how much time you need to complete your paper for each 15 marker and 20 marker and second step is to implement this strategy in your mock test third point time management ro time management is directly linked to word limit please remember there is you are been given word limit for a purpose okay एमितिया सेतमे दिया जायनि कि 15 मार्कर रे तुमे 1200 वर्ड लिखो बोली because this is not possible so you are given a limit please respect that limit and remember word limit ru अधिका लिखि तुमको बेसी मार्क मिलियो भी नहीं okay now 20 words 30 words भी तुम यदि एक्स्ट्रा लिखि देलो और कम लिखि देलो किछि फरक पड़ेनी because examiner will not be able to notice but if you are writing too much in excess of whatever is given let's say कि 250 word limit तमरो अछि but तुम लिखछ 350 word actually लिखिछ तो या पे तुमको एक्स्ट्रा मार्क किछि मिलिबो नहीं rather the examiner will be immediately be able to identify that you have written extra for this and that will create a bad impression so please stick to the word limit now यार बहुत सारा corollary अछि बहुत सारा benefit अछि first and foremost देखो जदि गोटे जो जिनस क्वेश्चन बहुत भल तुमको आसुची बहुत अधिका लिखले भी तुमको डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलियो मींस केते भल क्वालिटी आंसर लिखुच आ केते मार्क्स तुमको मिलुची दैट फॉलोज ए डिमिनिशिंग रिटर्न ग्राफ माने इनिशियली तुमको भल लिखले भल मार्क मिलियो बट आफ्टर ए सर्टेन फेज जते अधिका क्वालिटी लिखले भी बेसी मार्क मिलियो नहीं ओके 15 मार्क रे बहुत भल लिखले भी गोटे पिला गोटे भल मार्क भल आंसर लिखि ताको 10 मार्क मिलला तुमे बहुत भल लिखिछ 12 मार्क्स मिलियो जने एक्सीलेंट लिखिची या ठारो बहुत बेसी भल लिखिची 13 मार्क्स मिलियो कोनटा अधिका हला so what you have to focus is you have to rather try to complete your paper okay
जो क्वेश्चन टारे भल आछी सेथरे भी भल लेख, बट डोंट फॉरगेट अबाउट दैट क्वेश्चन इन व्हिच यू हैव लेस आइडिया। सेथरे एवरेज लेखिकी हेले आसो, एतिकी मार्क हेले मिलू, 4-5 मार्क हेले मिलू, because this will give you in in the end this will give you more outcome, higher outcome. Okay, now related to word limit, the fourth point is then how can we stick to the word limit? आउथरे टिके कहि दियंतु सर से मार्क्स। मार्क्स की मुझे कहली कि तुम बहुत अधिका भल लिखले भी बहुत अधिका मार्क अकॉर्डिंगली पाइबो नाही, माने तुम एफर्ट रो प्रोपोर्शनेट रे मार्क तुमको मिलिबो नाही। ओके, तेणु तुमरो गोल एतिकी हवा उचित कि जस्ट गोटे भल आंसर लिखिकी मूव ऑन कर जाओ नेक्स्ट आंसर। जो आंसर रे सॉरी जो क्वेश्चन तुमको बहुत भल से भी आसु नाही ताकू रादर अटेम्प्ट करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिकी मु एमती कहली मोर वीडियो देखियो जोतरे जो क्वेश्चन ता आसु भी नाही ताकू केमती हम अटेम्प्ट करी, तो सेतरे किछि किछि लेखो सो दैट यू विल गेट सम मार्क्स, because towards the end this will add up and give you better result than if you are trying to maximize whatever you know। एंड सेतरे बहुत अधिका लेख जो वर्ड लिमिट को क्रॉस करिकी बिकॉज़ तुमको लागु छी तुम पाखरे कंटेंट अछि, सेतरे बहुत अधिका मार्क तुमको मिलिबो ना। ओके, you will only be wasting your time, you will be writing more words exceeding the word limit, but you will not get the result। ओके, सर सेठी जो 4 और 5 मार्क्स लिखे जंती सेटा कोन सर, सेटा टिके मु सुनी पारलिनी। 4 और 5 मार्क्स माने जो क्वेश्चन ता तुमको भलो से आसु नाही सेही क्वेश्चन ने किछि ब्रेनस्टॉर्मिंग करके लिखिले 4-5 मार्क्स एटलीस्ट मिल जिवो। अभी एही भलिया क्वेश्चन न सपोज 4-5टा क्वेश्चन तुम एमिति अटेम्प्ट कर देलो तो 15 to 20 मार्क्स तुमको एक्स्ट्रा मिल गला। So this is better than if you are trying to add to whatever you know। जो क्वेश्चन ने तुमको बहुत भलो आंसर आसुची सेथिरे जदी वर्ड लिमिट को क्रॉस करके अधिया लिखुतो केबे भी तुमको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा सेथिरे मिलियो ना, सेथिरे हार्डली 5 to 10 मार्क्स एक्स्ट्रा तुमको मिलियो। So in the long run you will profit more if you attempt those questions also in which you have less knowledge on। Okay, तो सही भला तो ई भला माने मोर पर्पस होची कि तुम वर्ड लिमिट को क्रॉस करके कौन से गोटे आंसर लेख ना, वर्ड लिमिट भितर ही आंसर लेख। आ जो क्वेश्चन एते भलो से आसु नाही से तो ऑब्वियसली वर्ड लिमिट बहुत कम रे लिखिबो, बट स्टिल किछि लेख। ओके, एंड दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट। पिलांकर टाइम मैनेजमेंट एति पई हुए नाही बिकॉज़ समय कोन करन ना जो क्वेश्चन ता भलो रे आसु जेटा बहुत भाबी चिंती बहुत सारा जिंस लिखियो ट्राई करन, सेतरे अदर सारे बहुत जिंस वेस्ट करन, जो जिंस पचरा भी जाय नहीं एक्सेस जिंस देई दियो बिकॉज़ तांको लागे कि कुछ क्वेश्चन ता हमको आसुनी ता सेही जिंसटा एठी मेकअप हिजो, सेटा मेकअप हुए नाही। बुझी होची कोन कहली? यस सर। एनी डाउट्स इन दिस? नो सर मोर गोटे डाउट अछि, मु जेतरे जीएस माने आंसर लेखुछि तो माने कर गोटे रहिला कि फीचर्स रही छै देन सिग्निफिकेंस किछ रहउछि, तो फीचर्स रे जो 5-6टा पॉइंट लिखा हैला तापर किछि 2टा कि 3टा लाइन रे किछि कनेक्टिंग पैराग्राफ लिखिबार अछि ना डायरेक्ट सबहेडिंग बनेबार अछि कि सिग्निफिकेंस करके? जीएस रे कनेक्टिंग पारा लिखे तुम के कोच जीएस रे कनेक्टिंग पारा लिखे तो किछ नहीं, एसए एथिक्स ए सब इन कनेक्टिंग पारा लिख करी जीएस रे लिखिया दरकार, डायरेक्टली मूव ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग ऑफ द हेडिंग। सर ओके, एक्सेसिव डाटा फैक्ट देले किछि नेगेटिव इंप्रेशन बने कि माने सब्सटेंशिएशन रे नेगेटिव डाटा फैक्ट दे एक्सेसिव एक्सेसिव माने तुम केते एक्सेसिव कहू आई डोंट नो, बट आई डोंट थिंक इन जनरल तुम यदि नॉर्मल वर्ड लिमिट भितरे बेसी डाटा फैक्ट इसु दोछ नेगेटिव इंप्रेशन काहे आसी पॉजिटिव इंप्रेशन आसी बिकॉज़ तमर माने कंपटीटर्स। मानेकर 15 मार्क क्वेश्चन आछि मु लिखुछि 15 रु 17टा पॉइंट 17टा पॉइंट जदि मानेकर मु 10टा जगह रे पॉइंट देली सब्सटेंशिएट करली कि रिपोर्ट गुडा को कि कोठी इंडेक्स कोठी केते परसेंटेज अछि को कमिटी कोन रिकमेंड करछि, तो सेटा सब पॉइंट रे सब्सटेंशिएट करले सेटा नेगेटिव बेसी ही जो डाटा बेसी फैक्ट बेसी दोछि सेमती इंप्रेशन बनिबो ना पॉजिटिवली सेटा जीवो सर? तुम वर्ड लिमिट भितर टाइम मैनेज करके एति जिंस लिख पारछ 17टा पॉइंट लिख पारछ गोटे 15 मार्क क्वेश्चन मॉक टेस्ट लिखि जई वाला फुल लेंथ टेस्ट जई वाला लिखि जा। मु फुल लेंथ देनी सर, एटा मोर थर्ड मेंस हबो तो मु लिखिछि आगुरु तो आगरो यदि थर्ड मेंस तो मेंस रे से वाला पेपर भलो मार्क आछि कि नहीं, तो दैट इज द अल्टीमेट टेस्ट से वाला पेपर रे किन दिया मार्क आछि जेते अधिका सर मु पॉइंट देते। 2 मार्क रे मोर लास्ट ईयर रहि जेता सर। ओके, देन यू आर ऑन द राइट पाथ, यू कैन डू इट, बट एथरे मु 2-3टा पॉइंट आउ ऐड करी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सो दैट मींस यू हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट रे तुम्हारे पाखरे एक्सेस अछि डेटा फिगर एसो जिंस अधिका अछि, तो तुम गोटे जिन कि बुलेट पॉइंट रे एज फार एज पॉसिबल लिखियो बिकॉज एक्स्ट्रा कंटेंट जो थाए ना
वर्ड लिमिट भितर हमको लिखियो कहले हम पैराग्राफ को लिखियो ना बुलेट पॉइंट लिखियो डाटा केते लिखियो दैट डिपेंड्स ऑन केते तुम्हारो वर्ड लिमिट फर्स्ट ऑफ ऑल अछि आ केते सारा तुम्हें सब हेडिंग्स और कोन कहै दियो माने केते तुम्हें हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स लिखि पारुछ ता अंडर रे जस्टिफिकेशन रे लिखि पारुछ ओके बहुत बेसी लिखिले एमती माने यदि लागियो कि जार्गन बेसी ही होउची ताले स्टिक टू अ फ्यू थिंग्स फॉर एग्जांपल माने मु कोन कहया चाहूची आ गोटे वे रे तुमको कहूची लेट्स से कि तुमको गोटे क्वेश्चन आछि कि river interlinking okay and you have a lot of data on this let's say but try to think suppose river interlinking रो 20 points तुम पाखरे अछि गोटे 15 मार्कर पई फर्स्ट ऑफ ऑल एतिकी लिखिया दरकार नै 15 मार्कर पई पांचटा पॉइंट लिखि देले भी ताको एक्सपेंड कर देले भी हे जिवो 5 पॉइंट से भी एनफ सपोज बट तुम पाखरे भलो कंटेंट अछि ठीक अछि 5 पॉइंट जगह 10 पॉइंट्स भी लिखो 1 2 3 so on and so forth then गोटे लाइन अंडर रे बहुत सारा डेटा पॉइंट लिखि देलो सेकंड पॉइंट अंडर रे बहुत सारा लिखिलो थर्ड रे भी लिखिलो but the point is, instead of writing all 20 points, it is better if you write only 10 points, but each point को टिके टिके expand करके लिखते हो. Okay. So suppose point 1 में किसी expand करके लिखते हो, 2 रे लिखते हो, 3 रे लिखते हो, and these points should be one of the most important factors or points in your argument, and leave the rest 10 points, जोटा less relevant or less important तक छाड़ दिया. तारो reason यह हो कि see you cannot beyond a certain point you cannot impress the examiner. The examiner is a professional or an expert, at least that's what we hope. So the examiner knows 20 points तुमको जाना है examiner को 20 points examiner को in fact 50 points जाना चाहिए यहाँ पर तो examiners को तुम्हें 20 points देगी जो impress कर दो that is not the point. The point is कि 10 points लिखियो but बहुत भलो से यदि लिखियो then it is enough for a 15 marker point. This is enough. Now your exposition, your ability to explain and within the word limit how clearly, how lucidly you are able to explain, that will impress the examiner more. In your typical case, I'm saying, and your case is not a general kind of a case. So my suggestion is, if it is working for you, then it's great. If you want to change it, you want to improve it, then yes, write in bullet point. And instead of trying to write down each and every data, to find out the most important data, and within that point, expand only that part. And या छड़ा हो तुम पाखे यदि अधिका कंटेंट अच्छी ना ताको वैल्यू एडिशन हिसाब रे ताको ऐड करो वैल्यू एडिशन माने कोन सपोज डायग्रामेटाइज्ड आंसर वे रे एमितिया ऐड करो और सपोज एमितिया करके ऐड करो बिकॉज़ यू हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट सो यू कैन ऐड लाइक दिस और किसी गोटे बॉक्स भीतर हाईलाइट कर दियो दिस इज आल्सो नोन एज गिमिक गोटे बॉक्स करी किसी गोटे एक्स्ट्रा जिंस हाईलाइट कर दियो ओके so for you you can use these things rather than trying to club a lot of information within one answer. Okay. Yes, sir. Now time management रो गोटे last point मु कहबी bullet point versus paragraph. This is also directly related to time management because तुम यदि entire तुम्हारा answer sheet paragraph form रे लिखियो ताले time manage हबो नाही. So try to write in points as far as possible with some caveats or terms and conditions. Now I'll explain what are the terms and conditions. देखो आंसर आइडियली जीएस का आंसर केमती हबार अछि इंट्रोडक्शन ने एटलीस्ट वन लाइन लिखियार अछि तुमको एटलीस्ट कंक्लूजन ने एटलीस्ट वन लाइन लिखियो ओके एंड बॉडी पार्ट रे तुम्हें किछि किछि लाइन लिखी तापर बुलेट पॉइंट देकी लिखि करियो दिस इज एन आइडियल वे ऑफ जीएस आंसर राइटिंग व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस कि डिफरेंट पीपल डिस्पाइट दिस डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट टेंडेंसी जो माने यूजुअली आर्ट्स बैकग्राउंड रो और ह्यूमैनिटीज पढ़ी के आस्थांती सेमानकर टेंडेंसी होची कि सेमाने पैराग्राफ रे लिखि चलन ओके पैराग्राफ पर पैराग्राफ लिखि चली जो माने यूजुअली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रो आस्थांती सेमाने केवल बुलेट पॉइंट रे लिखियार तांकर टेंडेंसी होची बिकॉज़ इंजीनियरिंग रे भी सेही बळा बहुत हाफाजार्डली नोट्स सब बनान so you have to strike a balance between these two and the thumb rule for this is very simple where you have content जदि तुम पाखरे हाई अछि सेथरे बुलेट पॉइंट यूज करो जो थरे कंटेंट तुम पाखरे लो अछि सेथरे पैराग्राफ लिखो तारो रीजन होची कि both of these your paper will look filled up तो पेपर जति स्पेस दिया है फिल्ड अप लागियो सो एग्जामिनर को लागियो तुमको जଣା अछि जो थरे कंटेंट हाई अछि सेथरे बुलेट पॉइंट लिखिया इजी और अल्प टाइम भीतर लिख करियो जो थरे कंटेंट लो अछि मींस तुमको एते भलो से जଣା नहीं
सेटा पैराग्राफ थ्रू रे पेपर को तुम भर दे परिबो एंड एग्जामिनर को भी लागियो कि तुमरो आंसर शीट टा गोटे बढ़िया मिक्स अछि बुलेट पॉइंट आउ पारार बढ़िया कॉम्बिनेशन अछि किछि क्वेश्चन को बेसी बुलेट पॉइंट रे लिखछो किछि क्वेश्चन को बेसी पैराग्राफ रे लिखिछो एंड दैट विल लुक बेटर ओके so you know which question to write in paragraph which to write in bullet point don't adopt a single method for your entire answer ମୁଁ ଦେଖିଛି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଜିଏସ୍ କୁ ଆଇଦର ଖାଲି ବୁଲେଟ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ପାରାଗ୍ରାଫ ପରେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହୁଏ କେବଳ ବୁଲେଟ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଲେଖିଲେ ଏକ୍ସାମିନର କୁ ଫାଟିକି ଆସିଯିବ କି କଣ ୟାର ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଲେଟ ପଏଣ୍ଟ ରେ ରଖି ଦ୍ୟାଟ ମାଇଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଏନ୍ ଇରିଟେସନ ପାରାଗ୍ରାଫ ରେ କେବଳ ଲେଖିଲେ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ହବ ହିଁ ହବ ପକ୍କା so it is better to combine these two things but while doing this please don't forget कि बुलेट पॉइंट रे लेखुछ माने नुह कि एंटायर आंसर रे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन रो गोटे सिंगल सेंटेंस नाही so even if you are writing bullet point points are supposed to be written within the body part only intro conclusion will always be written in a line गोटे single line at least लिखियो okay and please don't make this rookie mistake किछि पिला अछंती समाने पूरा एमती इंट्रोडक्शन लिखंती हेडिंग लिखंती इंट्रोडक्शन तापर गोटे लाइन लिखिए तापर लिखिए बॉडी तापर लिखिए कंक्लूजन please don't make such kind of mistake also these are rookie mistakes introduction specifically word is mention hoba nahi body conclusion mention hoba nahi whatever whichever is your first paragraph that is your introduction whatever is your last paragraph that is your conclusion whatever is in between that is your body okay. And yes another thing many times people also don't write conclusion so somewhere what they will do is ki introduction body likhandi because conclusion likhiya difficult है भाभी की appropriate conclusion कौन हबो तो ସେମାନେ कौन करନ୍ତି body लिखि abruptly छाडिबो तो please abruptly छाडिबो नहीं try to write at least one conclusion किछि generic भी ही पारे but गोटा single line है लिखिया को try करियो because जो माने तमरो कॉपी देखुचंती they are usually 35 40 45 50 ए एज रो or even you know retirement age रो तो ସେମାନେ they are not very familiar with you know entirely bullet pointer सब जिनसे लिखा है तो they will feel irritated so at least तांक ପାଇଁ गोटे line introduction गोटे line conclusion लिखियो it's all about understanding the psychology of your examiner बुझी होसी Yes, sir. okay Yes, sir. within this question only there was another sub part की ethics रो specifically paper complete करिया को issue होची तो या अंडर फॉर एग्जांपल समझ लेते कि केस स्टडी लिखिया को इशू होचे राइट तो हेलो सर हाँ हाँ हेलो सर टिके आ गोटे एडिशनल क्वेश्चन थिला एचएस ପାଇଁ खास କରି ମାନେ हाँ ଯେତେବେଳେ ମାନେ एग्जांपल देबी कि जेमती अकाउंटेबिलिटी को जे भी हमर वैल्यूज पॉइंट फाउंडेशन वैल्यूज अछि तो गोटे क्वेश्चन माने डिफाइन करो कि जहा करो माने कि गोटे क्वेश्चन पछला जेतेला हम एग्जांपल दउ माने को एरिया रे से अकाउंटेबिलिटी वैल्यूटा रिप्रोड्यूस करछि ताको जेतेला एक्सप्लेन करके जाउ से माने से दुई लाइन रे सर होउनी माने एग्जांपल किछि गोटे दे देबा जेमती कि श्रीधर दे देबा माने जस्ट ना दे देबा कि ताको एक्सप्लेन करिया कि को जागा रे से अकाउंटेबिलिटी वा जहाँ फाउंडेशनल बिजनेस माने रिप्रोड्यूस करछन so again this is also a question of content if you have a lot of content then you can simply mention in bullet points bullet तो कहबिन qualified phrases रे you can mention जो थरे बेसी कंटेंट नाही सेथरे गोटे दुटा एग्जांपल तम पाखरे अछि ताको एक्सपेंड करके लिखियो ताको डिटेल ले लिखियो यार एग्जांपल कोन माने सपोज भाव कि इंटीग्रिटी ऊपर तम पाखरे बहुत पॉइंट अछि लेट्स से कि तुम जानछ लाल बहादुर शास्त्री कर गोटे एग्जांपल अछि तम पाखरे एग्जांपल अछि अटल बिहारी वाजपेयी कर है ना आउ सपोज आउ कार एग्जांपल अछि बहुत लोगों का एग्जांपल तम पाखरे अछि so when you are giving example just write one line कि लाल बहादुर शास्त्री showed integrity by resigning from post of minister after a railway accident गोटे शॉर्ट लाइन रे बुझे देला एतिकी बट जदि तुम पाखरे कंटेंट नाही सेटा को एक्सपेंड करके लिखियो कि an example of integrity is that Lal Bahadur Shastri when he was holding the post of railway minister there was a train accident lot of people died and thereafter taking responsibility Lal Bahadur Shastri gave resignation even if he was not asked for his resignation this shows so on and so forth means जोटी तुम पाखे कंटेंट नथिला सेठी गोटे दुटा एग्जांपल को तुम एक्सपेंड करके लिख जोटी बहुत सारा कंटेंट थिला हेटी सिंगल लाइन रे और क्वालिफाइड फ्रेजेस रे तुम लिखि दल
जोटा बहुत वेल नोन स्टोरी तुमको लगुच क्वालिफाइड फ्रेजेस थ्रू लिख पार क्वालिफाइड फ्रेजेस माने कंप्लीट सेंटेंस न होले भी जस्ट एनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से दिस इज रिलेटिवली सर see, आ all गोटे of this one second all of this is based on your common sense. There is no hard and fast rule, just use your common sense. These are just thumb rules. Yes, go on. सर आ गोटे प्रोब्लेम हुए माने एमती चारटा फाउंडेशनल वैल्यू को एक्सप्लेन करो विथ एग्जांपल कला माने लास्ट टाइम 10टा ना कि 7टा पढ़िला तो मोर सिटी टाइम मैनेजमेंट है तो सब जो वैल्यूज আছে ସେଇଥିରେ सब वैल्यूज रे गोटे गोटे एग्जांपल देथिनी तमरो टाइम सिटी प्रोब्लेम मतलब जदी एमती किछि जदी क्वेश्चन आछी एक्सप्लेन खाली करो कहला विथ एग्जांपल्स ना जो वैल्यूज को खाली एक्सप्लेन करी लास्ट को 2-3टा एग्जांपल दे दिला हिजो कि सब जगह रे देबा पड़िबो Last 2-3टा कर दियो जदि तुम टाइम मैनेज प्रीवियस केस रे टाइम मैनेजमेंट होन ताले एटा नुआ see the proof of the pudding is in the eating जो थरे तुमरो काम होउची सेटा करियो जोटा होउनी सेटा करियो जदि तुमको each and every detail दबार बहुत टाइम जाउची ताले दियोनी लास्ट रे खाली एग्जांपल दे दियो जदि बाय द वे जो जदि ये वाला 4-5टा देखो मु कोनोसी भी पर्टिकुलर एग्जांपल को जाउनी तुम संगे कोन हला इट्स डिफरेंट आई एम टेलिंग यू इन जनरल यदि 4-5टा बिट्स अच्छी गोटे क्वेश्चन में तो दैट इटसेल्फ शोस कि ईच बिट को बहुत बहुत ब्रीफली तुमको एक्सप्लेन करियार अछि ताको तुम गोटे बिट रे यदि बहुत बेसी एक्सपैंड करके लिखियो ऑब्वियसली टाइम मैनेज होबन तो ट्राई टू सो गोटे बिट भितरे सपोज तारो डेफिनेशन गोटे दे देलो और तारो गोटे एग्जांपल दे देलो देन इट इज फाइन बट जदि एति की भी तुमको टाइम होनी एथरे बहुत टाइम जाउची सो व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन क्लब टुगेदर एवरीथिंग एंड इन द एंड यू कैन गिव वन और टू एग्जांपल्स whatever works for you that is the ultimate test यदि वर्क करिवन that obviously ताको अडॉप्ट करियार किछ पॉइंट नहीं सर सेकंड सर ऑप्शन रे जदी जीवा माने मार्क ता कमी दबनी तो माने जदी एग्जांपल सहित डिपेंड करा होछे तो सेथिरे जो अल्प टिके मार्क कमिबो दैट इज बेटर देन कि तुम यदि एंटायर क्वेश्चन 2-3टा पछरे छाडी हो सेथिरे तो बहुत मार्क कमी दियो बुझु जो कोन कहूची ओके इट्स ऑल अ गेम ऑफ सर रिलेटिविटी हमको एट द एंड हमको नेट पॉजिटिव हमर टोटल बेसी आसीआर अछि यदि नेट पॉजिटिव बेसी आछी लास्ट रे सेही मेथड हम अप्लाई करी अगेन ऑल बेस्ड ऑन कॉमन सेंस तीन हम सबले कहि देखो तुम्हें भी एबी परफेक्शनिस्ट माइंडसेट अछि तुम पाखरे कंटेंट अछि तुम जानछो तुमको लागुची मते जस्ट आउ टिके अधिका टाइम दरकार होची टिके अधिका टाइम मिलले मु सब इनसे लिखि देबी टाइम केबे अधिका मिलिबो ही नहीं डोंट बी ए परफेक्शनिस्ट बी ए प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली जहां पॉसिबल जस्ट डू इट राइट एटा गोटे गोल्डन sentence please write down in your study table you have to be just good enough answer lekho and move on to the next question okay do not try to be a perfectionist yes someone else was asking something सर जो गोटे माने 20 मार्क की 15 मार्क को भी तार सब पार्ट कर दोची 5 मार्क 7 मार्क 3 मार्क एमती कर दोची सो 3 मार्क रे सर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखवा जरूरी कि ना ना डायरेक्ट ना पूरा स्टार्ट ना 3 मार्क लिखा दरकार नहीं 3 मार्क शॉर्ट लिखि दो इवन 5 मार्क भी यदि बहुत तुमको माथा फाची करिया पड़ुची कि एग्जैक्टली मन पड़नी देन आल्सो लीव इट जस्ट राइट द बॉडी पार्ट 10 मार्क रो गोटे सब पार्ट अछि देखो सब पार्ट अच्छा सब पार्ट रे तो मत गोटे कथा कहलो जो भी क्वेश्चन कहलो 3-5 कौन कहलो 3-5-10 एमितिया तीन माने पांच हां तो सर 8 माने हला 18 माने मार्क केमती 15 आसे मार्क गोटे क्वेश्चन लास्ट ईयर आइथिला सेक्शन माने 10 15 मार्क क्वेश्चन ए गोटे आछि 5 10 मार्क रे बी आछि 5 मार्क रे एमती दी दीटा सबतिर आइथिला तो ए दुईटा जाक तो गोटे ही सिंगल थीम और टॉपिक रू ही ऊपर ही क्वेश्चन ना और एटा गोटे अलग क्वेश्चन एटा गोटे अलग क्वेश्चन एटा गोटे सेपरेट क्वेश्चन इन द सेंस गोटे अलग टॉपिक ऊपर की टॉपिक 1 दिस इज टॉपिक 1 दिस इज टॉपिक 2 एमतिया तो हिन क्यों गोटे ना ना क्वेश्चन से अंडर हाँ सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली then for both of these you write a combined single introduction जहाँ भी थीम थिबो then दुईटा जाक पे गोटे सिंगल कंक्लूजन भी लिखि परियो एंड बॉडी पार्ट रे पार्ट ए रे स्टार्ट करियो ए रो जहाँ आंसर अछि बी रो जहाँ आंसर अछि तुम लिखियार अछि सेति लिखियो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन इज रिलेटेड टू द थीम इटसेल्फ यदि पूरा कंप्लीटली डिफरेंट अछि देन इट्स अ डिफरेंट थिंग बट आई डोंट थिंक सब सब पार्ट और माने बिट्स और सब सब क्वेश्चन रो माने ही ये है कि गोटे कॉमन थीम और कॉमन टॉपिक थिबो सपोज तुम केस स्टडी रे सेमतिया क्वेश्चन सब आसेनी गोटे केस स्टडी दिया हिथिबो तुमको ता अंडर को आइतो सो मे बी टोटल केस स्टडी इज 20 मार्क और समथिंग और बेसिक केते 60 मार्क और मोर मन पड़नी एग्जैक्टली केते
जहाँ भी हो से गोटे बीट थी 3टा बीट थी गोटे कहु कि माने एथिरे एथिकल डिलेमा कौन अच्छे आइडेंटिफाई कर तापर एथिरे लिखाई कि डिफरेंट कोर्सेस ऑफ एक्शन कौन ही परियो ताको इवैल्यूएट करो थर्ड क्वेश्चन हेतिबो कि तुमे कौन करिवो कुओ so but question is point is all three are related to the same case study therefore for you you have to write a single line introduction which is related to this case study single line conclusion related to the case study a ର ଅଲଗା आंसर हो b ଅଲଗା ହବ c ଅଲଗା ହବ but intro conclusion will be related to the topic है ना जीएस रो भी जदि सब पार्ट्स और बिट्स आछी ताले प्रोबेबली सी भी गोटे टॉपिक रिलेटेड ही हिथिबो बुझिजो तो ईच बिट्स ପାଇଁ सेपरेट इंट्रो बॉडी कंक्लूजन लिखिया आवश्यकता नहीं ओके आई थॉट कि तुम एमतिया कहूची क्वेश्चन 1 अछि जेमते आसेनी कि सपोज 5टा क्वेश्चन अछि Q2 Q3 Q4 1 रे गोटे शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट क्वेश्चन एमती आसुगला आगु सेतरे कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन थाए 1 2 3 4 5 कंप्लीटली डिफरेंट थाए तो सी तो अलग कथा बट तुमरो यदि गोटे क्वेश्चन अंडर रे ई भलिया आंसर सॉरी डिफरेंट बिट्स आछि दे विल बी रिलेटेड टू वन टॉपिक ओनली ओके बुझे होची कोन कहूची yes sir हेलो सर यस सर ओपीएस रे गोटे गोटे क्वेश्चन पके दउची कि माने तार कंटेंट ही कम किंतु सेटा 20 मार्कस रो पके दउची जेमति कि पूर्व थर पकेइथिला भीतर सिग्निफिकेंस तो केते बार लिखियो सेटा केमति हैंडल करियो सेमति टाइप रो क्वेश्चन ब्रेनस्टॉर्मिंग करियो कम क्वेश्चन अछि यदि ब्रेनस्टॉर्मिंग करी कि नुवा आइडिया एक्जिस्टिंग आइडिया बाहर करियो सपोज देखो भीतर कनिकार इंपोर्टेंस मो तुमको जस्ट गोटे एग्जांपल दूची ऑलरेडी तुम जानछ बहुत बेसी सेमते सिग्निफिकेंस तुम माइंड रे नहीं ओके तो जहाँ जहाँ सपोज तुम भितरकनिका विषय रे बहुत अल्प नोट करथिला सपोज तुम केवल एति नोट करथिला कि भितरकनिका गोटे रामसर साइट ते को तार जियोग्राफिकल लोकेशन तार को डिस्ट्रिक्ट रे अछि ओके सेटा को रिवर ताको फीड करूची ओके इधर कौन कौन स्पेसिफिक एनिमल्स अछन सपोज एति जिंस जानिथिला बे ब्रेनस्टॉर्मिंग कौन या भितरु तुम भाबियो कि आउ फर्दर कौन कौन या विषय मु जानि सपोज रामसर साइट विषय बहुत सारा जिंस बाहर जीव 1971 ईरान में हितला रामसर साइट रो पर्पस कौन टू प्रोटेक्ट और कंजर्व वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस पुणी या अंडर फर्दर अछि मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड जोटा वैनिशिंग वेटलैंड गुडा को ताकू आमे से लिस्ट भितरे पकाउछु सो दैट देयर विल बी रिजुवेनेशन एफर्ट्स ओके नाउ गोटे पॉइंट रू किछि एक्स्ट्रा पॉइंट बाहरला आउ किछि पॉइंट सपोज एनिमल्स एथिरे कोन कोन एनिमल्स अछंती सपोज कि एथिरे क्रोकोडाइल्स अछंती एथिरे बहुत सारा एम्फिबियंस अछंती आई वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ए सब जिंस रो फर्दर तुमरो जीएस एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी रू जेनरिक कांसेप्ट जहाँ अच्छी से सब जिंस यूज करो फॉर एग्जांपल एम्फिबियंस रिलेटेड भलो कांसेप्ट अछि कि एम्फिबियंस आर एक्ट एज इंडिकेटर स्पीसीज कि गोटे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी रो से माने हेल्थ को शो करन so that means कि भीतर कनिका जो एम्फिबियंस अछंती ताको आदे हम प्रोटेक्ट करियो that will help preserve a pristine ecosystem okay. Amphibians are the first kind of species to vanish in case of any kind of pressure or changes in the ecosystem so they will show कि your ecosystem is going bad सेमितिया सपोज भीतर कनिका आउ कोन अछि बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस अछन तो लिंक दिस टू योर अदर काइंड ऑफ नॉलेज जीएस रे देखो फिशेस रो हमें फिशरीज एक्वाकल्चर एंड डिफरेंट फिशरीज को बूस्ट करि परिया देखो जबरदस्ती पॉइंट करूछु बट पॉइंट तो रेलेवेंट ना तो भीतर कनिका कैन नाउ आल्सो हेल्प इन एक्वाकल्चर एंड फिशरीज डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज इन आवर स्टेट नाउ यू विल राइट ए जेनरिक पॉइंट टूरिज्म भीतर कनिका कैन हेल्प इन स्पेसिफिकली इको टूरिज्म रे हेल्प करि परियो नाउ दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लस इकोनॉमी बुझि पारछो तुम पाखरे जेतिकी एक्जिस्टिंग बिलीव मी व्हाट एवर यू हैव प्रिपेयर्ड यू हैव एनफ कंटेंट टू राइट नॉट ओनली 10 मार्कर मु तो कहबी ऐसे भी लिख परियो तुम यदि सिंसियरली तुम प्रिपेयर करछो ओनली थिंग इज कि यू थिंक ऑफ एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट और साइलोज रे तुम भाबो भीतर कनिकार क्वेश्चन आछि जेते बेले जदि जीएस 1 पेपर रे आछि ज्योग्राफी पेपर रे यू आर अनेबल टू इंटीग्रेट जीएस 3 इकोनॉमी रो पार्ट को इंटीग्रेट करि पारो नाही बिकॉज़ साइलोज रे सब जिंस पढिछो now when revising or reading from now on you think in terms of interchange of ideas gs1 gs3 sangre केमिटा लिंक करियो and while writing go through this brainstorming method
And when writing any answer, suppose you have less content, then do brainstorming and write more content. You will always be able to generate a lot of content if you have sincerely prepared for this exam. कंटेंट रो कमी केतले नाही, ओनली जिंस कि तुम माइंड रे कोन मेंटल ब्लॉक अछि कि ए टॉपिक ऊपर ए पेपर रे बेसिक जिंस मते जाना नाही। अरे सेही टॉपिक रो सेही पेपर रो न जाना सब अन्य जीएस पेपर रो तो आईडिया आनी परिबो ना। बुझे होचे कोन कहूच? Yes, sir. Thank you, sir. Okay, then I'll pick up more questions from you also. Let me just finish whatever questions were asked to me in the beginning. हमें ज्यादा questions collect करथिलु। आउ गोटे लास्ट क्वेश्चन थिला कि साइंस एंड टेक स्पेसिफिकली केमती प्रिपेयर करू, हाउ टू प्रिपेयर। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, if you are asking this kind of question, somehow I feel कि you have not sincerely studied this before, है ना। बहुत सारा लखुना আছে, पूरा सब्जेक्ट टॉपिक टा ही पूरा छाड़ी देइछ। तबे लास्ट मोमेंट रे कोन करियो, करंट अफेयर्स उठेबो, तार समरी देखियो, सेथरु थीम आइडेंटिफाई करियो, फिर पीवाईक्यूज रु थीम आइडेंटिफाई करियो, आ करंट अफेयर्स रु जहा जहा से थीम को मैच करतो से जिंस पढो, बस एति। आ कोन भी कर परियो। फॉर एग्जांपल, सपोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने देखो जो कि तुम्हारा जीन एडिटिंग ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आछे, तो करंट अफेयर्स रिलेटेड करंट अफेयर्स देखियो, जीन एडिटिंग ऊपर कोन कोन न्यूज़ आछि, ता ऊपर गोटे बेसिक नोट प्रिपेयर कर दो। आई हैड ऑलरेडी गिवन यू अ हैक और ट्रिक तुमको कहितली। यदि एतिकी भी न करि परियो, सिंपली चैट जीपीटी रे पचा पकेबे जिंसटा जीन एडिटिंग, व्हाट इज जीन एडिटिंग, व्हाट इज इंडियन गवर्नमेंट डन ऑन जीन एडिटिंग, जहाँ कंटेंट आछि तार गोटे स्मॉल नोट, ब्रीफ नोट गोटे बनै दो। एई भला थीम आइडेंटिफाई करो, 50 थीम्स आइडेंटिफाई करो केवल साइंस एंड टेक रे। फॉर एग्जांपल, टेलीकम्युनिकेशन ऊपर क्वेश्चन आसुथबो हमर, आ कोन कोन साइंस एंड टेक रे आ कोन क्वेश्चन आसे, सपोज कोविड-19 आर्टिफिशियल ऊपर, इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम बायोटेक कंप्यूटिंग। के ऊपर ए सब जिंस आसला, क्वांटम कंप्यूटिंग। तो ये आइडेंटिफाई करो 50 टा एटलीस्ट इंपोर्टेंट थीम्स आइडेंटिफाई करो, एंड मेक वेरी ब्रीफ नोट्स एंड रिवाइज दोस नोट्स। दिस इज द ओनली थिंग यू कैन डू राइट नाउ। जदि तुमरो प्रॉब्लम है कि तुम पाखरे नोट अच्छी बट ताको रिवाइज करि पारनो टाइम रे, देन तारो सॉल्यूशन अल्ला। जदि तुम बट तुम क्वेश्चन नो लागु छी कि तुम टोटली पढ़ी ही ना, जदि टोटली पढ़ी ना हो, एबे तुम साइंस एंड टेक जदि टेक्स्ट बुक आरंभ करियो, फॉर एग्जांपल रवि अग्रवारी पढ़िया स्टार्ट करियो, एग्जाम पूर्व केबे सरीबो नाही। rather you will ignore or neglect many of other subjects. Again, this is all about Pareto principle, 80-20. Science and tech is not that important in the sense कि माने एथिरु एबळा नो कि बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन आसीयो जोटा कि तुम किछि भी लिखि परिबो। so what you have to do is कि या भीतर भी इंपोर्टेंट आइडेंटिफाई करो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, एंड तार शॉर्ट नोट्स बनाओ, सेथरु जति जिंस आसीयो सेति जिंस लिखियो, जो जिंस आसीयोनी सेतरे ब्रेनस्टॉर्मिंग करियो, किछि भाबी के लिखियो। ओके, एनीथिंग एल्स? सर यस। सर जदि गोटे माने एसे टॉपिक रे माने तोर 6टा सब माने क्वेश्चन अछि, ता भितर 2टा चूज करियार अछि, तो सर सेटा माने ता भितर जदि 4टा एसे आसुथिबो तो को 2टा माने चूज करिवो, माने केमती माने फिलोसॉफिकल टॉपिक गोटे धर पड़थिबो, आउ 4टा नॉर्मल टॉपिक एआई के एनवायरनमेंट की सोशल मीडिया एजुकेशन एमती पड़थिबो, तो धर 4टा हमको आसुची तो 2टा ता भितर केमती माने चूज करिवो। वेरी गुड। देखो, तुम ऊपर डिपेंड करे तुमरो आंसर क्वालिटी। मु जाने नहीं, मोर रे जेनेरिक एडवाइस दोउची। बहुत सारा फैक्टर एतरे काम करे एसे रे। फर्स्ट फैक्टर होची कि व्हिच टॉपिक यू आर चूजिंग, टॉपिक रो लेवल ऑफ डिफिकल्टी। सेकंड इज कि तुमरो निजरो आंसर क्वालिटी कोन से टॉपिक पे। डिपेंडिंग ऑन बोथ ऑफ दिस यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स। नाउ गोटे सिंपल जिंस होची कि जेतले लेवल ऑफ डिफिकल्टी जेतले बढ़िवो, सेतले टॉपिक से टॉपिक को लेस लोक चूज करिवे, राइट। तुम कंपटीटर्स लेस नंबर रे चूज करिवे, so that means कि तुम यदि डिफिकल्ट टॉपिक को चूज करियो, you will get better marks in general because you are your answer will stand out from others. But again, suppose difficult answer topic choose करी कि तुम हेतरे भलो आंसर लिखि पारु ना हो, आंसर क्वालिटी बहुत लो अछि, then again you will not get good marks.
बट गोटे डिफिकल्ट क्वेश्चन यदि एवरेज आंसर भी लिखिच देन यू विल गेट बेटर मार्क्स आउ जदि गोटे बहुत इजी क्वेश्चन ने बहुत भलो आंसर भी लिखिच इन कंपैरिजन टू योर कंपिटिटर्स दीज आर both will get just above average marks. So now it is your job to think ki whether you can write a good answer on a certain topic or not. So philosophical questions in general जेहेतु टिके वेग ही थाए ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଲୋକ ୟାକୁ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି ନାହିଁ these are usually difficult to expand and write GS type topics जेहेतु easier थाए पिलाମାନେ पढिथांती प्रिपेयर हेइथांती these are easy to write and बहुत लोक ताकू से ऊपर आंसर लिखिए so my suggestion to you कि जदि philosophical topic ऊपर तुम भलो प्रिपरेशन करिचो and गोटे at least तुमको ऐसे भलो से लिखि परियो then please write a good answer on a philosophical topic and choose the second essay as a GS topic in which you can write very good answer but ସେଥିରେ ଦେଖ ସେଥିରେ competition हबो and तुम competitors को तुलना रे तुमको just above average marks ही मिलियो but in combination you will get very good marks if you are very good at essay writing excellent okay you have very good command over the knowledge and you understand what is the demand of your question essay topic कौन exactly तुम जानिचो तुम्हें even दुईटा philosophical question को choose करके भलो आंसर लिख परियो you will get excellent marks because your answer will stand out from everyone else on the other hand जदि तुमरो कमांड इंग्लिश रो कमांड एते भलो नाही किबा essay ऊपर एते भलो आईडिया नाही बेसी essay लिखि ना हो and तुम्हें philosophical topic तुमको लिखे हो difficulty way then choose both GS topics one be GS topic two be GS topic because at least now you will get average marks at least so it all depends what is your criteria and at where you stand regarding to your competitors okay tomorrow preparation tomorrow confidence tomorrow knowledge level केते अछि ता ऊपर डिपेंड करे तो tomorrow यदि बहुत भलो knowledge भलो ग्रास्प अछि भलो लिखिछ आगुरु ऑलरेडी ऐसे दुईटा को philosophical topic रे लिख परियो जदि तुमको लागुच कि गोटे philosophical topic ऊपर बहुत भलो से आनचो आ GS topic ऊपर दुई तीन टा ऊपर बहुत भलो आईडिया अछि ताले कॉम्बिनेशन करके लिखो गोटे philosophical गोटे GS जदि तुमरो भलो कमांड नाही इंग्लिश ऊपर किंबा टॉपिक भी भल से बुझी पारुनो philosophical topic तुमे आगुरु भलो से लिखिनो भलो मार्क पाइनो ସେଥିପାଇଁ अंडर कॉन्फिडेंट भी अछो ताले दुईटा को GS टॉपिक ही चूज करो ओके थैंक यू सर सर आउ गोटे डाउट कि धर दीटा ऐसे मैंने चूज कलु तो इंट्रोडक्शन टा धर फास्ट ऐसे रे मैं एनेक्डोट रु स्टार्ट कलु आउ सेकंड ऐसे रे धर कोटेशन कलु सेमती कले हबो ना दीटा का एनेक्डोट कले किछ असुविधा नै दुईटा को एनेक्डोट कले भी किछ असुविधा नै मोर एसे राइटिंग क्लास ऊपर वीडियो अछि सेते देखियो सेते मु डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन एसे पई भी डिस्कस करछि ସେଥିରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଛି କି କୋଉ ଟାଇପ ର इंट्रोडक्शन ଟା बेटर प्रिफर्ड कोउटा मिडिल लेवल लो कोउटा सबडू लोएस्ट लेवल लो फॉर एग्जांपल तुम जो एग्जांपल देलो anecdote is one of the best ways to start anything okay quotation is somewhat middle level लो introduction सबडू फालतू काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन हला एसे पई डाटा और रिपोर्ट ई सब जिंस फैक्चुअल जिंस स्टार्ट करियो तो यार रीजन या हला कि एसे इज नॉट जीएस एसे रे कोन एसे रे तुमको एग्जामिनर को बांधी की रखिया पई ताको गोटे बहुत ही इंटरेस्टिंग जिंस स्टार्ट जदि करि पारुचो देन योर एसे विल बी वेरी गुड so anecdote is that kind of thing गोटे स्टोरी रू तुम स्टार्ट करूचो तो एग्जामिनर को इंटरेस्टिंग लागियो how you are moving from that story to whatever is the theme of your essay so जदि दुईटा को एसे रे भी anecdote लिखबे किछ असुविधा नै तो गुड वे ऑफ स्टार्टिंग एथरे मिक्स एंड मैच करिया दरकार नै again this is all based on your common sense तुम्हें एमतिया नहीं कि तुम दुईटा को ऐसे पई भलो एनेक्डोट तुम पाखरे अछि बट जेहेतु गोटे एनेक्डोट लिखि दैछो तुम कहयो कि नेक्स्ट मु कोटेशन नु स्टार्ट करी कोटेशन इज आल्सो टू सर्टेन एक्सटेंट बोरिंग यार केते कोटेशन पढ़ले केते तुमको मजा आसे यू थिंक ऑफ योरसेल्फ तुमको स्टोरी पढ़ले बेसी भल लागे ना कोटेशन पढ़ले बेसी भल लागे तुम्हें एग्जामिनर हेले कोन प्रिफर करियो गोटे गोटे आंसर स्टार्ट हेची कोटेशन नु ना गोटे आंसर गोटे स्टोरी रू स्टार्ट हेची यू विल ऑलवेज प्रिफर टू रीड द स्टोरी so that's my सर advice मोर गोटे any क्वेरी हाँ अच्छा सर जो एसे जो आछि माने दुईटा क्वेश्चन हमको अटेंड करबा छै दुईटा क्वेश्चन रो ब्रेनस्टॉर्मिंग फरक रे करबो ना गोटे क्वेश्चन रो ब्रेनस्टॉर्मिंग करलो गोटे लेखिलु तापर नेक्स्ट क्वेश्चन रो ब्रेनस्टॉर्मिंग करलो पुनी लेखिलु सेंती ମୁଁ ଆଡଭାଇସ୍ କରିବି କି ଗୋଟେ ବ୍ରେନଷ୍ଟର୍ମ କରିକି ଲେଖିବ ସେକେଣ୍ଡ ଲେଖି ସାରିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ରେନଷ୍ଟର୍ମିଂ କରିବ यार रीजन या ହେଲା କି ବ୍ରେନଷ୍ଟର୍ମିଂ ଏମିତିଆ ନ ହଉ କି ବ୍ରେନଷ୍ଟର୍ମିଂ କରୁ କରୁ ତମେ ବହୁତ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିଦେଲ
फॉर एग्जांपल सपोज 180 मिनिट्स तुम पाखरे अछि, यू थिंक ऑफ दिस एज 170 मिनिट्स ओनली, तो याकू भी इक्वली डिवाइड कले केते मिनिट्स आछी, 85 मिनिट्स अराउंड आछी ना, 85 85। बट देखो फर्स्ट एसे लिख सारा पर तुम्हें टिके टायर्ड हो सेकंड एसे पई, तो सेट पई फर्स्ट एसे को 80 मिनिट्स टाइम नियो, सेकंड एसे को 90 मिनिट्स टाइम नियो। ओके, तो 80 मिनिट्स को फर्दर डिवाइड कर दियो बिटवीन ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड राइटिंग। तो लेट्स से कि एथिरे तुम्हें 15 मिनिट्स, 10 टू 15 मिनिट्स तुम्हें ब्रेनस्टॉर्मिंग कर परियो, रेस्ट टाइम तुम्हें लिख परियो। 90 मिनिट्स रे याकू सेंती फर्दर डिवाइड कर दियो 15 मिनिट्स एंड नेक्स्ट होची तुम लिखिया पे बाकी टाइम। एंड 50 मिनिट्स केवल ब्रेनस्टॉर्मिंग करियार नो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिकी ताकू ऑर्गेनाइज थॉट को ऑर्गेनाइज करिकी पछरे गोटा रफ बनेवा, ओवरऑल आइडिया बने दवा। नाउ दैट इज ए फ्रेमवर्क रा वंस बने देलो देन लिखिया पता तुम पई इजी हो जिवो। तो स्पेंड 10 to 15 minutes initially to write the brainstorm the first essay, बाकी टाइम रे 80 मिनिट्स रो बाकी टाइम रे essay लिखियो। सेमतिया सेकंड essay पई 15 मिनिट्स एटलीस्ट, बिकॉज़ सेकंड essay को टिके मेंटली टायर्ड हो, तो 15 मिनिट्स इनिशियली तुम नियो ब्रेनस्टॉर्मिंग करिया को, एंड बाकी टाइम रे तुम essay लिखियो। इनिशियली दुईटा को यदि ब्रेनस्टॉर्मिंग केवल करियो ना, तो तालू तुमको आउ गोटे रीजन टाइम भी पैनिक फील हवा स्टार्ट करि पारे, बिकॉज़ देखो essay पेपर रे समस्त ब्रेनस्टॉर्मिंग करिया नाही, तुम्हें बसिक लिखियो तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रफ रे, तो पछरे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ना, तुम साइड रे बहुत पिला स्टार्टिंग रू लिखिया स्टार्ट कर दे, तो तांको देखिकी गोटे पीयर प्रेशर काइंड ऑफ डेवलप हो। तो ताको भी अवॉइड करिया पई गोटे रही केवल ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, 10-15 मिनिट्स नहीं कि आराम से ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, सब पॉइंट ऑर्गेनाइज कर दियो, तापरे लिखो। सेकंड एसेटा लिखिया पई 15 मिनिट्स आउट के एक्स्ट्रा टाइम नहीं कि भाबी की तापरे लिखियो। ओके, बट एका संगे दुईटा करो ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। यस सर। फर्स्ट केवल कौन करियो, केवल चूज कर दियो फर्स्ट 3 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ नहीं प्रथम चूज कर दियो कि को दुटा टॉपिक तुम्हें माने लिखियो, तापरे फर्स्ट टॉपिक ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करियो, सब लिख सारला परे सेकंड एसे रो तापरे ब्रेनस्टॉर्मिंग करियो, सेकंड एसे लिखियो। सर यस, सर जो एसे 125 मार्क तो मिनिमम केते पेज लिखा पड़ो दीटा एसे? पेजेस संगे एथरे किछ नै, एथरे वर्ड लिमिट ऊपर अछि, तुमरो बोधे 1200 कि 1400 एमतिया कते अछि, वर्ड लिमिट कते अछि? सर 1000 वर्ड 1000 और 1200 चेक कर सर दो, थाउ व्हाटएवर इट इज, सपोज 1000 वर्ड्स अछि, तुम्हें एथरे आउ टिके एक्स्ट्रा भी लिख परियो, 1200 वर्ड पर्यंत भी लिख परियो, 1100 1200 वर्ड्स भी 1000 लिख to परियो मैक्स। 1200. 1000 to 1200, वेरी गुड। तो देखो 1200 वर्ड्स अच्छी माने तुम्हें 1200 रु अति बेसी 1300 पर्यंत लिख परियो, ताठू अधिका लिखिया उचित नो। तो तुम हैंड राइटिंग रे 12 टू 1300 मैक्स जति होची, एबे एटा मॉक टेस्ट रे टेस्ट करके देखो, जति पेज होची सेति लिखियो। एथिरे पेज संगे बेसी संपर्क नै, तो वर्ड लिमिट रे अछि, बहुत अधिका लिखियार पॉइंट भी किछ नै, बिकॉज़ ता पई मु अगेन कहि दिल तुमको डिमिनिशिंग रिटर्न सब मिलियो। ओके, बहुत अधिका लिखि बहुत अधिका मार्क तुमको मिलियो। तो वर्ड लिमिट भितर जति के आसी सेति लिखो, भलो से लिखो, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। आ देखो या ठारू बहुत अधिका तुम पेजेस लिखि पारिबनी, बिकॉज़ यू हैव अ टाइम लिमिट आल्सो, 3 आवर्स भितर केते तुम लिखो। तो ये जो लिमिट दिया है एटा भी 3 आवर्स को देखिकी ही दिया है, तो तुम चाहिले भी बहुत अधिका पेजेस लिखि पारियो नाही, तार भी गोटे लिमिट अछि। गोटे दुईटा एक्स्ट्रा पेज लिखला पर आ केते अधिका लिखियोनी, ताठारू अधिका लिखले तुम वर्ड क्रॉस कर जिवो, टाइम रु एपटे क्रॉस कर जिवो, सेकंड एसे पई तुम टाइम हबनी। ओके, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू रिमेन इन द मिडल, माने मध्यम मार्ग जोड़ा माध्यमिक मार्ग सेटा ही फॉलो कर, वर्ड लिमिट भितर रखी रही कि राइट अ गुड एनफ एसे, दैट शुड बी योर गोल। एनी अदर क्वेश्चन? हेलो सर. सर एबे टेस्ट सीरीज को बैलेंस केमती करियो कथा, केमती कोन टेस्ट केते केमती कोन? टेस्ट सीरीज को बैलेंस, टेस्ट सीरीज आ कोन बैलेंस करियो, कोन क्वेश्चन मु बुझ करली आउथरे क्वेश्चन? एबे जो 35 दिन की 30 दिन रहला केते कोन टेस्ट देबा कथा, केते रिवीजन को देबा प्रायोरिटी देबा कथा, टेस्ट केते प्रायोरिटी देबा? नो वॉइस एक्चुअली कटि कटि आसी, आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपर्ली, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? ए 35 डेज रे टेस्ट केमिते दवा कथा? ए 35 डेज रे टेस्ट को केते प्रायोरिटी देबा कथा, रिवीजन को केमती कोन बैलेंस करबा कथा, टेस्ट और रिवीजन को ओके बैलेंस ओके करबा? ओके, आई गॉट इट।
Okay, this is a very good question. Test series ଆଉ revision को केमती आमे balance करियो? एंड सर मोर गोटे रिलेटेड क्वेश्चन थिला माने बहुत जण कहନ୍ତି कि माने जहा पाखे जदी टाइम नाही तमे टेस्ट सीरीज बदल रे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी फोकस करि पारो तो मु जेमति कह दी मु जण वर्किंग प्रोफेशनल तो मते टिके टेस्ट सीरीज देबा पय मध्ये टाइम टिके हुएनी तो सर केमती सेटा को ये करी Okay. So I can explain, but my personal advice to you is कि please, and तुम्हारे इतने issue हो ना तो somehow you have to find some extra time. So I don't know how you will get it, but somehow यदि leave apply करो कि किसी करो at least 1 week आगुरु करो because तुम्हें इतने टिके panic करू जो मुझे जानी पड़े तो अभी इतने panic करू जो you need some time to revise and consolidate things proper. So anyway, I'll take up your question, but this is just my personal advice to you. तो ओके इन जनरल टेस्ट सीरीज और रिवीजन को केमिति आमे मैनेज करिया और बैलेंस करिया देखो जदि तुमरो बहुत सारा फैक्टर ऊपर डिपेंड करे जदि लेट्स से कि तुमरो सिलेबस रिसेंटली तुम आगु कवर कर देछ देन व्हाट योर स्ट्रेटजी राइट नाउ शुड बी दैट थ्रू टेस्ट सीरीज तुम्हें सिलेबस रो 70 to 80% कवर करिया को ट्राई करियो सिलेबस को so this is the ideal case scenario but I don't think many people are at this position जो मानकर syllabus already आगुरु से पढ़ी की सारी दीचंती बहुत सारा पार्ट आउ सेमान पाखरे एतिकी लग्जरी अछि कि टेस्ट सीरीज थ्रू रे आउट ताको रिवाइज करी सो बेसिकली टेस्ट सीरीज थ्रू रे तमरो रिवीजन ही हिजो तो फॉर मोस्ट अदर पीपल जो मानकर सिलेबस भी सरीनी बट सेमान को टेस्ट सीरीज दबार अछि so what I will suggest is that you have to do both of these things parallelly and what you can do is कि को भी टेस्ट सीरीज तमे जॉइन करूछ तारो टेस्ट सीरीज रो शेड्यूल जहा अछि से हिसाब रे तुम स्टडी शेड्यूल भी बनै दियो एंड दैट शुड बी वेरी वेरी रिजिड माने होची कि सपोज नेक्स्ट 35 डेज रे तुमरो जहा भी शेड्यूल बनै छ लेट्स से कि तुम टेस्ट सीरीज रो शेड्यूल अछि कि मंडे दिन अछि टेस्ट गोटे गोटे को गोटे सेक्शन ऊपर देन वेडनेसडे दिन आउ गोटे का ऊपर अछि फ्राइडे दिन आउ गोटे का ऊपर अछि सपोज दिस इज एटा पॉलिटी रो गोटे सेक्शनल टेस्ट अछि एटा अछि इकोनॉमिक्स रो गोटे सेक्शनल टेस्ट देन फ्राइडे दिन गोटे फुल लेंथ टेस्ट अछि देन तुमरो स्टडी शेड्यूल भी सेमितिया सेट करो सो दैट सही दिन पॉलिटी रो सही पार्टटा सरियो इकोनॉमिक्स रो सही पार्टटा सरियो एंड फुल लेंथ जति की भी हेची ताको कवर करके अटेम्प्ट करियो जहां भी तुमको आसुछ एंड या थ्रू रे तुम यदि 80% सिलेबस कवर हे गेला एग्जाम आगु देन इट इज गुड एनफ ओके बट यू सर्टेनली डोंट हैव दिस लग्जरी राइट नाउ कि तुम केवल गोटे जिंस करियो इधर टेस्ट सीरीज और रिवीजन तुमको तो दुईटा एक जिंस करियो पड़ियो एंड एथि तुमको टाइम ब्लॉक और टाइम बॉक्सिंग तुम यूज करि परियो so for example if you think that suppose this is morning रे गोटे ब्लॉक तुमको 2 hours मिलुची आफ्टरनून रे 1 hour मिलुची एंड राति रे जस्ट एन एग्जांपल एंड राति रे लेट्स से कि 4 hours मिलुची स्टडी करियो देन यू कैन डिवाइड दिस कि ओके मो पाई टेस्ट सीरीज दवाटा बहुत इंपोर्टेंट तो 4 hours भितर 3 hour मु गोटे टेस्ट लिखी आ 1 hour रे रिवीजन लास्ट 1 hour रे रिवीजन करी एथिरे किछ गोटे नुवा जिंस पढी एथिरे आ गोटे जिंस नुवा पढी सपोज एथिरे पॉलिटी पढी एथिरे इकोनॉमिक्स पढी you have to make your time blocks like this and you have to efficiently utilize whatever time you have on the other hand the question that is कि तुम पाखरे एतिकी भी टाइम नहीं कि तुम्हें फुल लेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ सेक्शनल आउ फुल लेंथ भितर एबे देखो सेक्शनल टेस्ट लिखियार माने किसी नहीं डायरेक्टली फुल लेंथ टेस्ट ही लिखो जति तुमको आसुची सेतिकी लिखो बिकॉज एबे तुम पाखरे टाइम नहीं कि सेक्शनल पढ़ी की लिखियो तुम आउ 2 मास आगु स्टार्टिंग रे सेक्शनल रू स्टार्ट करा जाए ଯେମିତି କି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଜଷ୍ଟ ସରିଲା ତାପରେ ସେକ୍ସନାଲ ଗୁଡାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି କରି ପିଲାମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ଫୁଲ ଲେନ୍ଥ ଲେଖନ୍ତି ବଟ୍ ଏବେ ମାସଟେ ପୂର୍ବରୁ ତମ ପାଖରେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ directly go to full length test so then someone is saying कि suppose you don't even have the time to write full length test then you are saying कि ମୁଁ କଣ କରିବି ନା previous year paper लिखी previous year question लिखी yes certainly you can do that but again maybe ଏଇଟା enough ହବ कि नहीं ମୁଁ ଜାଣିନି ଯଦି previous year paper ଲେଖୁଛ at least last 5 ବର୍ଷର ଯାହା ବି exam ହେଇଛି ତାର ଯଦି previous year ଲେଖି ପାରିବ then it's well and good ତା through ତୁମର ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ cover ହେଇପାରିବ 3 to 5 years at least ତାର ବି ଲେଖି ପାରିବ ଦେଖ 3 ବର୍ଷର ବି ଲାଷ୍ଟ ତମେ ଯଦି ପେପର ଲେଖିବ 4ଟା जीएस पेपर ଆଉ ଗୋଟେ ଏଥିକ୍ସ ର ମିଶାଇଲେ କେତେ 5ଟା पेपर ହଉଛି 15ଟା पेपर ତମାନେ ଭାବ 15 एफएलटी ସାଙ୍ଗରେ इक्विवेलेंट so this is also good enough और जदि तापरे मते संभाव लागुची कि तुमको लास्ट कहियो कि मते या पई भी टाइम होनी तो मते आइडेंटिफाई करंतु इंपोर्टेंट क्वेश्चन और इंपोर्टेंट टॉपिक कोन तो now your job will not be done so please be very very serious if you are not taking FLTs
and should certainly solve previous year papers without first going through them in detail. तो कौन करियो कौन से टॉपिक ऊपर भल से प्रिपेयर है कि सेई माने प्रीवियस ईयर पेपर न देखि 3 घंटा निजको अलर्ट करियो एंड जस्ट पेपर बाहर करियो एंड लिखिया स्टार्ट करियो ठीक छ तो माने एमितिया न हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने भी तुम प्रीवियस ईयर पेपर टाको भल से देखि पढ़ी कि ता ऊपर रिसर्च करके देन ताको 3 घंटा लिखुछ से बेला कले ता हेतु किसी शिखियो नाही ओके so prepare for any topic any paper then directly start writing and एथिरे जो मिस्टेक करियो सतिर बहुत जिंस तुमको शिखिया मिलियो rather than कि तुम यदि आगुरु क्वेश्चन पेपर देखि प्रिपेयर है कि लिखियो एंड मिनिमम 3 years to try करो प्रीवियस ईयर पेपर लिखियो जब तुम पाखरे बेसी टाइम नाही और जो मन को पाखरे नॉर्मल टाइम अछि इन द सेंस कि समान आगुरु प्रिपेयर है जो सेक्शनल टेस्ट की लिखी सारी so what you should now do is कि start writing FLTs full length test लिखिया start करो सर yes हम्म, सर ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन थिला कि जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन जो आसे एग्जाम रे जेमति कि डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इफ यस हाउ यू कैन अचीव इट इफ नॉट व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स कि धर एमति आसीबो विल इट बी पॉसिबल कि डू यू एग्री विथ द स्टेटमेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू जहा ଗୋଟେ स्टेटमेंट माने एथरे क्लियर कट हमर जिंस माने yes कि नो लिखी था आर्गुमेंट लिखबो ना yes नो दीटा लिखिया पड़िबो यानी पॉजिटिव very good नेगेटिव देखो it all depends on what is the topic and what is the paper okay for example let's say कि there is a question in your optional paper कि is sociology a science what do you think okay तो तमे सेठी कहयो कि ना आज्ञा मते तो लागुनी सोशियोलॉजी साइंस बोली तेणु सोशियोलॉजी साइंस नुह सोशियोलॉजी तो गोटे गप भलिया मु पढुची एथमे साइंस नुह योर एंटायर आंसर विल बी रॉन्ग but suppose your question is let's say कि do you think artificial intelligence is going to be good for humans or not. Now, here you can give your opinion. You can say yes, you can say no, you can say give a balanced view, whatever you can do. Standard tricks जहाँ से इधर use कर परियो. Because इधर clear cut answer कौन कहाँ को जाना नहीं. So it all depends on what is the to what level the question is factual, consensual or discretion based. फॉर एग्जांपल फैक्चुअल जो थरे थिबो हतरे तो फैक्ट बेस रहते तुम किछ करियार नहीं तुम जानछो कि एटा हबो कि न हबो फैक्ट बेस रे लिखियो कंसेंसुअल बहुत सारा जिंस कोन कंसेंसस डेवलप होईची बाय एक्सपर्ट्स कि whether something is true or not or whether something is going to happen or not एथरे ओपिनियन कोन अछि जेमिते कि भाबो फैक्चुअल रो मु तुमको एग्जांपल दोउची सपोज एथरे डाउरी भी गोटा फैक्चुअल क्वेश्चन इज डाउरी गुड और बैड वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन नो इट्स बैड व्हाई बिकॉज़ इट इज अ फैक्ट कि इट हैज बीन आउटलॉड बाय आवर कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन रे मना अछि लॉ डाउरी एक्ट रे लिखा अछि डाउरी नहीं परियो नहीं फैक्ट नहीं परियो नहीं सो यू हैव टू टेक दैट स्टैंड बहुत सारे जिंस कंसेंसुअल अछि कंसेंसस डेवलप होईची कि दिस इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग ओके जेंडर इक्वालिटी यस कंसेंसस डेवलप होईची इट शुड बी देयर सेमितिया सोशियोलॉजी वेदर सोशियोलॉजी इज अ साइंस और नॉट एक्सपर्ट मान कहते कि यस इट इज साइंस तो अगेन जहां कंसेंसस डेवलप होईची तुमको सही जिंस लिखियो पड़ियो तो सेटा को तमे कहबो कि ए एक्सपर्ट या कहिचंती से एक्सपर्ट से कहिचंती सो देयरफॉर माय ओपिनियन इज आल्सो द सेम दैट आई आल्सो बिलीव दैट यस इट इज पॉसिबल और इट इज नॉट पॉसिबल व्हाटएवर इज द केस now there will be a few questions in which you will have your discussion and usually these are questions related to gs4 ethics वाला क्वेश्चन ही पारे essay रे आस्ते पारे एई वाला क्वेश्चन एई वाला पेपर ही आसीयो जीएस पेपर और ऑप्शनल पेपर यूजुअली फैक्चुअल और कंसेंसुअल ही आसीयो तो सेथिरे तो बहुत क्लियर कट तमरो पर्सनल ओपिनियन सामने मागु नांती by their question what they mean is ki what is the general consensus on this thing okay but discretion ki cheez question hai the discretion pacharti then certainly you can take your stand but again even when taking your stand if the question is not that clear cut मैं जाना नहीं कि को स्टैंड हो it is better कि तुम्हें each stand को justify करो first और pros versus करियो and finally तुम्हारो निजरो verdict दी करियो तुम्हारो निजरो opinion कौन और तुम्हें लिख पारियो कि हाँ एटा गोटे कोर्स ऑफ एक्शन 1 रो एटा माने यार प्रोज एंड कॉन्स या अछि कोर्स ऑफ एक्शन 2 रो प्रोज एंड कॉन्स या अछि एंड फाइनली मोर ओपिनियन होची हमें एई कोर्स ऑफ एक्शन नबा होची so there you have your discretion there you can say ki yes this is my opinion and you can justify your opinion but in these two criteria you have to confirm
to whatever is laid down or whatever is their consensus jaha jothre build up is. Okay, बुझे हो कौन कहूँ. थैंक यू सर. Any other questions? How found out it? हेलो सर. Hello. सर ଏଠି ଆମର 15 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋ ଡାୟାଗ୍ରାମ ଅଛି, କନକ୍ଲୁଜନ ବି ଅଛି, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ବି ଅଛି, ବଡିରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ରହିବା କଥା? କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ହାର୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ରୁଲ ନାହିଁ ନା. ଇଟ୍ ଅଲ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ୟୋର ୱାର୍ଡ ଲିମିଟ କେତେ ଅଛି, ମୋ ସେତିକି ସ୍ପେସ ରେ ତମ ପାଖରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେତେ ଅଛି. ଯେତେବେଳେ ପଏଣ୍ଟର ଆମେ କରିଯାଏ କି 1 2 3 4 କରିବା, ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିଯାଏ କି ନାହିଁ ଏତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଲିଖିଛି ଇଭାଲୁଏଟର ଉପରେ. ତ ସେ ଅନୁସାରେ ପଚାରିଥିଲି କି ଯଦି ମାନେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିଦେଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବଟ୍ ମୋର 6-7ଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ମାର୍କର ଅଛି ଆମର 15 ମାର୍କର, ସେ ଡାଇଗ୍ରାମ ବି ଅଛି, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କନକ୍ଲୁଜନ ଅଛି. ତ ମତେ କେମିତି ଗୋଟେ ଏଇଟା କଥା କୁହ, ତମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କନକ୍ଲୁଜନ ଡାଇଗ୍ରାମ ଭ୍ୟାଲୁ ଏଡିସନ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଲା ପରେ ୱାର୍ଡ ଲିମିଟ କୁ ଷ୍ଟିକ୍ କରିକି କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ବି ଲେଖି ପାରୁଛ? ଲେଟ୍ସ ସେ କି 15 ମାର୍କରେ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖି ପାରୁଛ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ତମର ଆନ୍ସର ରେ? 15 ମାର୍କର ସର ଏଟଲିଷ୍ଟ 8-9 ପଏଣ୍ଟ ରହିଯାଉଛି. 8 to 9 ପଏଣ୍ଟ. each Yes. ପଏଣ୍ଟ କୁ ତମେ କିଛି ଜଷ୍ଟିଫାଇ ବେଶୀ କରିପାରୁନଥିବ, ତାହେଲେ ସପୋଜ ପଏଣ୍ଟ 1 କିଛି ହେଲା, ପଏଣ୍ଟ 2 ବେଶୀ 10 words ରେ 10 to 15 words. देखो तुम पाखे कंटेंट जेहेतु एक्सट्रा अच्छी, मोर एडवाइस होची 8-9टा पॉइंट न लिखिकी 5टा रु 7टा पॉइंट लिख, बट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एंड ईच पॉइंट को टिके एक्सपेंड करके ताको फर्दर एक्सप्लेन कर दियो. सब पॉइंट देकी लिखार पॉइंट किसी नहीं, बट पॉइंट को भल भाव में बुझे पार जस्टिफाई कर दे पार बेटर हो. पिलांकर Actually, यूजुअली sir, इशू हुए कि कंटेंट तांको पाखरे कम थाए, तो सेथरे इशू हुए. तुम पाखरे यदि कंटेंट अधिका अछि यू कैन सेटल, बिकॉज देखो तुम कंपिटिटर माने समस्त भी 5-7टा पॉइंट भी भल से एक्सप्लेन कर पारिबे ना. ओके, तुम पाखरे 8-9टा पॉइंट यदि अछि, या भीतर रिलेटिवली जोटा लेस इंपोर्टेंट गोटे दुटा पॉइंट न लिखिकी यू फोकस ऑन एक्सपेंडिंग व्हाटएवर यू हैव रिटन, एंड दिस शुड बी द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स. लेसर इंपोर्टेंट पॉइंट को काटी दो. thank you. सर बट इन एनी केस आई डाउट वेदर, देखो तुम यदि इंट्रोडक्शन लिखलो, कंक्लूजन लिखलो, डायग्राम भी करूछो, आउ तुम बॉडी को भी माने क्वेश्चन डिमांड को भी एड्रेस करूछ, वर्ड लिमिट द्वारा तुम ऑटोमेटिकली तुम लिमिट ही जीवो केते बेसी पॉइंट लिखि पारियो. ओके, तो बट स्टिल जदि तुम 8-9टा पॉइंट 15 मार्कर लिखि पारुछ, इट्स बेटर कि 8-9टा पॉइंट न लिखि किछि पॉइंट कमे दे, 5-7टा पॉइंट लिखि ताको टिके टिके एक्सपेंड करी बुझे दियो. यस, समन जास. सर आपण जो कहले ब्रेनस्टॉर्मिंग विषय से वीडियो कोठी अछि, माने यूट्यूब रे ना कोठी? यूट्यूब रे अछि, ओसीएस प्रेप विथ सौरभ दास एंड टीम. एते जाइके देखियो, प्लेलिस्ट भी थिवो, जीएस एसए एंड जीएस आंसर राइटिंग ई वाला किछ गोटा प्लेलिस्ट थिवो, आंसर राइटिंग प्लेलिस्ट थिवो, ता अंडर रे 4-5टा वीडियो थिवो, सेतिरे अछि. थैंक यू सर. Yes. Any other question? जी जहाँ आम डिस्कस कलु सब बुझी हला, और किसी डाउट अच्छी किसी मु बुझे देवा भितर भी जदि किसी डाउट अच्छी पचारि परियो, बुझेला बेले यदि एक्स्ट्रा किसी डाउट भी क्रिएट हला ताले भी पचारि परियो. यदि बेसी किसी नाही ताले मु तुमको आउ किसी एक्स्ट्रा पॉइंट्स किसी तुमको कहबी, then you can then perhaps we can wind up after some time, we can wind up our session. तो अल्प आउ किसी पॉइंट तुमको कहयार अछि. यूजुअली मु पिलान को एक कथा कहे कि गोटे आस्क फ्रेमवर्क अछि. If you go through some of my videos, you will also see कि I have explained this thing to you, to other people also कि
there is a hierarchy of things in your answer writing. First is at the most basic level, there is knowledge. Just above the knowledge, you have skill level, and above skill, there is attitude. Attitude, skill, and knowledge. ASK, ask. Now, obviously, knowledge level तो समस्त बुझा पड़तो भला आंसर लिखिया पई गोटे बेसिक लेवल रो एटलीस्ट नॉलेज रहिया दरकार पिलांगर तुमर यदि नॉलेज रे यदि डेफिशिएंसी अछि you can easily remedy that you can work for it you can read answer skill होची तारो next level टा होची skill is answer writing skill. Now to develop this answer writing skill you will need more time and you have to practice a lot. ता थ्रू रे स्किल डेवलप हेले कोन हो से नॉलेज रो तुम मैक्सिमाइज कर परियो बेले बेले नॉलेज भी जदी सफिशिएंट नथिबो टू स्किल्स you can write a good enough answer. Brainstorming is that kind of a technique which is a skill only, in which even if you have less knowledge on a certain specific question, still through your skill that you have developed over a course of time, you can write a good enough answer. On your side, on your topic, through knowledge and creativity through you can write a good enough answer, or at least you will get some marks in that question. Okay. So this is an example of skill. Skill is that kind of ability that you can write good answers to the questions that you know, and average or even below average answers to questions that you don't know. But in any case, you should not leave any questions. Your goal should be to try to attempt almost all of the questions. Okay. But above, so that is about skill. But above that, there is one more layer, and that is attitude. Attitude is entirely different. Knowledge thai par tum pakhre skill thai pare, but jad tum pakhre attitude nahi, then attitude alone will make a difference of let's say 10-20 marks per paper. Okay. Yaro reason kono? Because attitude will determine where you are putting your focus on. Attitude will determine whether you are attempting certain questions or not. Attitude will also determine to some extent how you are able to manage your time. And all of these combined will certainly make a difference. यार गोटे एग्जांपल कहूची जेतेबेले बेले बेले कौन हुए ना आंसर राइटिंग आमे जेतेबेले स्टार्ट करू in a single day you will feel there is a mental block in your head. You are not able to immediately you are not able to generate points and write, and this is because when we start our day there is a tendency to continue that inertia. आमे किसी लिखी ना हो तो inertia आसी no लिखिया. So when you understand this, then you go to the exam and the first few questions गोटे दुटा question ना तुमको आंसर लिखे difficulty हो वो slowly start करियो. That will eat up your time. So when I realized कि okay this is a problem with me, then I tried to find solution. Then I saw कि there is a very there is a you can call it a trick or hack. What people do is कि many people nowadays are doing this कि suppose आज ही मोर एग्जाम अच्छी suppose 9:30 और 10टा बेले एग्जाम अच्छी मु सकाळे उठी कोन करबी आज भी एग्जाम डे रे भी सकाळे उठी कि दुईटा क्वेश्चन आंसर लिखी बहुत रैपिडली लिखी भलो ही पारे खराब ही पारे बट लिखी. The reason is just so that that mental block is broken. So that by the time I go to the exam hall, I would have written two answers and there is no mental block. I'll see the question paper, I'll underline the keywords, then I'll start writing. I'll think and I'll start writing. This is an example of attitude. Whether you have that winning attitude or not. And believe me, this makes a huge difference. This is the difference between winners and losers. 10 mark difference per paper, 10 mark difference just because of your attitude. Across let's say 5 or 7 papers, 50 to 70 marks difference. ये 10 marks difference कहीं आसला because तुम्हें तुम्हारा inertia थिला सेति तमे स्टार्टिंग रे क्वेश्चन रो आंसर लिखबार टाइम नेलारू टाइम मैनेजमेंट ठीक से ही पारला नहीं लास्ट गोटे क्वेश्चन तुम छाड़ी देला और 15 मार्क क्वेश्चन गोटे भलो से लिखि पारलो नहीं. ओके जो थरे तुमको मिनिमम 10 मार्क्स मिलिया कथा एतरे तुमको 5 मार्क्स मिलेला. दैट इज द लॉस 10 मार्क्स लॉस इन ईच पेपर. ओके now this is just an example of attitude of one example माने भाबो different facets of this attitude. Your attitude should be right now the attitude of a go getter. Okay जो champion mindset जहाँ को कहा जाए ये देखियो जो बहुत strong player जो माने they are very motivated on their field and you have to have that mental alertness, mental clarity. You have to have that hunger when you go to the exam hall as much as you have right now. एमितिया न हो कि डिमोटिवेटेड है कि एग्जाम हॉल ले जीव तुमको लगे कि यार मु तो बेसी किसी पढ़ीनी मोर कंपिटिटर्स माने सब पढ़ी देछन. योर एटीट्यूड शुड बी कि जति पढ़ियार थला मु पढ़ी देछि जा किछि जिंस जो छाडी हिछि से ता ऊपर भी क्वेश्चन आसी ता ऊपर भी आंसर लिखबी.
एंड जदि मु एतिकी हार्ड वर्क कला परे जदि क्वेश्चन फिर भी मते किछि क्वेश्चन आसु नाही ता माने होछि मोर कंपिटिटर्स काहाकू भी से क्वेश्चन आसु नाही. This should be your attitude. I'm giving another example. Many times in our exam hall, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ସ ଆନ୍ସର ଲେଖୁଥିଲି ମେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ଦଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଟେବୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ବସିବି ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିକି ରଖେ एंड वाटर बॉटल ତା ପ୍ରପର ପ୍ଲେସ ରେ ୱାଚ୍ ତା ଜାଗାରେ ରଖା ହେଇଥିବ ଇଭେନ ପେନ୍ ର କେପ୍ ବାହାର କରିକି ମୁଁ ରେଡି ହେଇକି ବସିଥିଲି. So I remember in last attempt one of my not friends, I just saw this guy sitting next to me and he was observing me or something and at some point he said कि भाई तुम तो सब बेले कौन रेडी ହେଇକି ରହୁଛ क्वेश्चन पेपर दबा आगुरु पूरा पेन धरिକି ରହୁଛ. I said it's fine, like it is a personal thing. But that was only a reflection of my attitude कि क्वेश्चन पेपर आसिला माने what I used to do is कि ମୁଁ क्वेश्चन पढ़ू पढ़ू ही each and every keyword को अंडरलाइन करूଥିଲି एंड ସେଥିରେ କିଛି माइक्रो नोट्स क्वेश्चन पेपर रे छोट छोट नोट्स लिखिଥିଲି. सपोज कि କିଛି ଗୋଟେ कीवर्ड ମୁଁ लिखिदेली एंड सपोज गोटे आसी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1. ओके तो poverty, that is removing poverty, or suppose number 2 माने zero hunger. सपोज जीरो हंगर ऊपर गोटे क्वेश्चन आसी तो हंगर देखिला माने मो माइंड रे जहा जहा अल्प अल्प किछि जहा आइडिया आसी क्वेश्चन पढ पढ मु से क्वेश्चन पेपर स्टेबल कर दिए. बिकॉज हुए या कि जतला आमे आंसर लिखु ना मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ही हम भूली जाऊ एंड परे हमको लागे कि यार ए पॉइंट लिखियार थिला. So that level of preparedness rather than being very very relaxed and हाँ क्वेश्चन पेपर पढ़िया हमें आंसर लिखिया एंड से पिला माने कौन करन लास्ट बेल पैनिक करन टाइम मैनेजमेंट ही करन. All of this you see small changes in your orientation thinking ability which is going to make a big impact. These are examples of champion mindset and these all come under attitude. I would aspect attitude or champion mindset रखी कि fight for the last mark. 1 mark ପାଇଁ भी fight करो. Okay. One of my friends, I'll tell you a very funny story. One of my friends here who got into the service, he said a very funny thing to me. He said कि last year also I had taken my exam and I was not on in the list. If you say reserve list ର ବି last mark ରେ ନଥିଲା ସେ reserve list ରେ ବି ନଥିଲା. ସେ କହିଲା କି ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ପଡିଲା କି ମୁଁ optional last paper ଯେବେ ଲେଖୁଥିଲି because that is the final important paper that you are going to write. ऑप्शनल लास्ट पेपर जो मैं लिखुଥିଲି गोटे लास्ट क्वेश्चन थिला बेल ऑलमोस्ट रिंग वार्निंग बेल रिंग ହେଇଥିଲା एंड पेपर नवाकू फैकल्टी माने एग्जाम रे से आसुतले एंड गोटे मु बहुत टायर्ड ହେଇଥିଲି हाथ माने एमती पूरा हाथ हाथ मोर क्रैम्प्स आसीथिला तो गोटे एक्स्ट्रा पॉइंट मो मन को आसुतला पॉइंट और जहां भी मते लिखियार थिला बट समहाउ मते लागले कि यार गोटे पॉइंट पे गोटे मार्क मते एक्स्ट्रा भी मिलिबो तो से पॉइंट नहीं कि मु कोन करिवे मते एमती एग्जाम ओवर हे गलानी 99% ओवर हे गलानी तो मो हाथ भी पेन करतला तो मु रखिदेली पेपर छाड़ देली. And what happened is that in the final reserve list also he got only 1 mark less. Okay. And he kept cursing himself कि जब maybe say देखो हे पारे से आउ को पेपर भी एडजस्ट ही करथन से जिंस बट ता माइंड रे से जिंसटा बार बार आसला कि मु ए जिंसटा भाबिथिली कि मु आ गोटे मार्क एक्स्ट्रा पाई थिले आ गोटे मार्क एक्स्ट्रा आनी कोन करिबी मे बी दैट बैकफायर्ड ऑन मी मे बी यदि मु से पॉइंट लिखि देथांदी मार्क आसी थांदा. So I'm not saying कि that means that you have to be very stringent, but the point is कि you should try to fight each and every mark. Don't let anything go. Prelims may be dicey, but mains is to a great extent in your hands. If you write good answer, you will get good marks. That is for sure. So develop that attitude from now on, that winning mentality or champion mindset एबे तारू develop करो and write good papers and without putting yourself under too much pressure to try to bring out the best out of you. And believe me, no one in this exam is perfect and no one has covered everything. Everyone is in the same boat as you. But the difference you are going to make is in your attitude, then your skill, and finally, only finally, in your knowledge level. Okay? Remember this framework: attitude, skill, and knowledge. So with that, I think if you have no further question, then we are going to wind up our session. I hope you like this session. You can give some feedback to sir also, and you are always welcome to, if you have any further doubts also, maybe before exam you can also
take up a few queries. Okay. There is something किसी urgent जब query आसला. Otherwise, I think we have covered almost every important topic. Yes, sir. Yes. Someone asking. Sonali Pravanjan, someone is saying something. No, sir. I say कि thank you so much, sir. You're welcome. Okay, so please implement whatever suggestions I have given, and if it is working for you, then all well and good. If it is not working, then feel free to change that also. Okay, it's entirely up to you. I hope you enjoyed this session, and if you face any further issues, also I'm always there for you. Okay. So all the best, guys, and that's it. I'm going to end the session.